Good afternoon, everyone. I am CA Hiral Gajera, moderator of this webinar. We are delighted to welcome you all in this webinar being organized by Continuing Professional Education Committee of ICAI. It is my pleasure to be a moderator for this session on Gift City and recent updates from 58th GST Council Meet. In a short while, we will start this webinar. I would like to appraise you about CPE Committee. The profession of chartered accountancy is growing leaps and bounds, and its phenomenal growth has brought the profession at the forefront. Today, our profession has acquired an indispensable position in the business and economy. ICAI continuously aims at developing knowledge edge so that the members stand out to the expectation of the society. To achieve this objective, the CPE Committee of ICAI has been continuously striving for profession, integrity, and knowledge, which make the word chartered accountant synonymous with excellence in service. In this direction, CPE Committee has always been proactive to the emerging needs of its members, enabling them to acquire contemporary knowledge and skills to face the challenges effectively by organizing CPE programs and providing adequate opportunities. The program for this evening is as follows. We have two sessions of 1 hour each, and the topics are: first is update on the 50th GST Council meeting, and second would be Gift IFSC Financial Gate of Future. Our eminent speakers will talk about above mentioned two emerging areas of professional interest. So now I would like to give introduction of our first faculty for the today, CA Praveen Dandaria ji. I welcome you, sir. CA Praveen Dandaria ji graduated from HL College of Commerce, Ahmedabad in the year 1997 with first class. Also, he got scored exemption score in indirect taxes in CA final exams. He has been a practicing chartered accountant since 2002. He has been speaker in various seminars conducted by Ahmedabad, Baroda, Bhavnagar, etc., and a few other branches of ICAI as well. He is also appointed as co-opted member of Indirect Tax Committee at ICAI New Delhi for financial year 23-24. So with brief introduction, I request you, sir, to take the session further. Thank you, Hiralji. All dignitaries present here, I would like to take this opportunity to thank you everybody and allowing me this opportunity to present my views on this 50th this GST amendments. So without wasting much time, hope I am audible to the participants. Yes, sir. Okay. So can I start the screen sharing, sir? Yes, sir. Please start. I think the screen is now visible to everybody. Yes, sir, it is visible. Thank you. So, friends, I would like to share my views on this 50th GST Council meeting, wherein number of changes have been made and number of simplicities have been introduced. Vis-a-vis, there are a lot of confusions which have been created by issuance of various circulars and notifications. I would like to just brief out the today's agenda. It would be mainly divided into 4 parts. We will be discussing and touching around the rates which have been proposed to be decreased or changed or increased, and simultaneously there is a big impact on gaming industry, wherein judgment of Karnataka High Court is presently being challenged before Supreme Court,
and simultaneously the things are in the hands of council by making retrospective amendments. Then most awaited trade circulars, trade facilitations, and at last would be giving some thought on this. So let us directly go to the portion of changes in the tax rates which have been proposed and will soon be notified. Please note any changes in respect to taxes, rates, or the clarifications, those have impact from the date of notification. So few notifications have come and few are yet to be issued. First and the foremost proposals from council is uh, in relation to some goods which are being in dispute since long time. Many of them are in relation to food, cooked, uncooked, branded, unbranded, raw cottons, some zari work, fish. So these are the commodities wherein tax rate was under challenge since long time. At some places, it was asked for 18%, demands were raised, litigations are going on, and they have introduced or they have redefined the word as and where basis to as is basis, thereby meaning pure trading, there is no value addition to any of these items. Simultaneously, they have simplified and reduced the rate to 5%, the lowest rate available in the schedule 1 to 6 in the notification 1 2017. So they have simultaneously, I would not like to touch down each and every item, but broadly I would like to clarify here is these are the items where a lot of litigation has been happening since long time. Now government have realized that there is no sense in litigating this. They have standardized this rates to 5% in all these commodities, and they have simultaneously clarified that this rate will be effective for all the things going on wherein the tax have been paid, wherever those cases will not be allowed to be reopened. Basically, as and where basis is a concept was always prevalent in sandwich credit rules, wherein it has been said that goods are being procured and are being returned without even touching it. So where word have been removed from this as is basis. So by and large, government want to just deal with the trading community, wherein in the name of simplicity, they says that whatever these commodities rates are being reduced, we are proposing to tax it at the rate of 5%. So if any outstanding demands are there, that can be litigated in the name of this circular being in favor of trade, and the matters can be closed. However, please note again, I am telling the cases where taxes have been paid at higher rate shall not be allowed to be reopened and no refunds shall be allowed to be given. One section of the recommendation of the council in relation to this serious high value drugs, wherein exemptions have been given considering the background of our country, wherein medical cases are coming up like anything. So these are the goods wherein exemptions have been given specifically for particular purpose. So this exemption is in relation to medical goods, that is medicines, have been procured for specific diseases and by specific person which are being listed by Center of Excellence. It is a Government of India body. These are the two banks which have been allowed to import the gold as per the OGL policy of Government of India, RBL and ICBC. One sector which has been touched down is tobacco. Now, friends, I don't know how many of you are aware of. In earlier regime of central excise, there was a concept of APC.
annual production capacity. The taxes have been imposed on the machine basis. Machine capacity based taxes have been demanded from the trade. Various notification and circulars have been issued at that relevant point of the time. Now in GST, the same system have been re-proposed to be introduced, and currently wherever the retail sale price is not required to be mentioned, because ad valorem has been discontinued due to there are a lot of leakages in revenue. So from the new proposal, actually they are going back to the earlier regime of taxing the tobacco manufacturers on a machine capacity basis. Now here a lot of litigation is being expected to arise, thereby saying, I am giving you an example that if any of the machine is capable of producing 10 lakh pouches a day, so entire records duty have to be at first paid as per 10 lakh number of counts machine capacity, and government was earlier also not giving any discount in the if less number of pouches or less number of quantities produced. However, in particular scenario when the machines are closed down on temporary or permanent basis for a longer period of time, then it was required to give a letters to the department wherein for that particular period duty could not have been demanded. So basically they are returning back to their old tried and tested systems where revenues of the government are secured. Only challenge would be in exceptional cases wherein machines are in not workable position, some repair maintenance is going on, whether they are going to give exemptions in those or not. So friends, this tobacco pan masala system, they are also proposing to withdraw the refund for export of tobacco pan masala items as well as methanol oil, metha oil. Now it is very strange here to note that how a circular can restrict a legitimate refund which is being provided by section 54 of CGST Act. So this will be tested in the courts over the period of time. So friends, let's wait and watch. But there are notifications available restricting the refund in particular category of class of people, as in case of builders. Earlier it was in case of textile. The refunds are restricted. And as of now, there is no particular challenge in the court of law. But this also will carry a great amount of value addition, the plowing back of the taxes, as in the agreement earlier with UN, wherein it was settled and it was agreed upon, where taxes cannot be exported. Herein, if the duty is being allowed not to be refunded back to the exporters, how that agreement is going to be valid, that has to be also checked. Because if you stop refunds in this case, then either you have to allow procurement at the rate of 0.10 paisa as per notification 40. So those amendments are also required to be proposed, and let us see, the time will tell how this new system will evolve by restricting the refunds in the case of exports. They are also planning to introduce a new mechanism of filing returns. I am not going in the name of forms and the periodicity and everything that will be available through proper channel and legal sources. But they are introducing new forms for this particular class of person to file on regular basis. That will be monthly only. There is no other way out. And there could be also another challenge if the duty is collected on APC, that is annual production capacity, is subsequent sale will be subjected to GST or not.
that will be also under big challenge. So for this particular class of category of SSE, we have to wait for another clarification to come up. I shall be moving on another clarification or proposal from GST Council, that is on vehicles. So presently SUVs, sports utility vehicles, have been classified under special category, wherein the length of the vehicle was exceeding 4,000 mm. Capacity of the engine is 1500 cc, and the ground level clearance is 170 mm above. So these were qualified to be called SUVs, and they were taxed at particular rate. Now the new proposal is they are removing the word sports from this entire definition. So any vehicle, now it is being that any vehicle, these two conditions are continuing, wherein ground clearance is 170 mm and above, tax would be at 50%. So I think sedans like Honda City, Ciaz would be out, and I think all high-end vehicles, Creta, Kia, those will be all be coming under this net of taxation at the rate of 50%. Now there is a litigation going on this. There was one judgment in case of Tata Motors. There was an advance ruling, rather I can say, which in case of Tata Harrier have called for weight to be considered on laden and unladen basis. So how to calculate this 170 mm height is a big challenge. So advance ruling came from Bombay, Maharashtra, which says that unladen laden weight should be calculated. Laden weight should be calculated. Unleaded weight should be calculated. I apologize. Unleaded weight is the vehicle is empty. There is no person sitting inside, and no luggage is also being stored in the boot of the car. So those vehicles have to be those height after putting in particular weight, the height has to be above 170 mm. That advance ruling was challenged before AAAR, and it said nothing doing. It should be a laden weight. So once you load this luggages and the passengers, then if your car is above 170 mm, then only it can be called as SUVs, and the taxes of 50%, which is now been proposed, has to be charged. This clarification, which is being issued, the particularly in proposal, they are amending this provision altogether, and they are considering unleaded weight, not the leaded weight, means the vehicle without any passengers and vehicle without any goods stored in the boot of the car have to be considered for this 170 mm and above ground clearance. Excuse me, Now, sir. Sorry to interrupt. yeah. Sir, your screen is frozen, I guess. The PPT is not moving. Okay. Which screen you are looking right now? So it's the first slide. GST recent changes. You do not see that slides are moving? No, sir. Okay, I'll restart this sharing again. 1 minute. Can you see the first screen, first page? Yes, sir. I am just putting on the slide. Is it visible? No, sir. Only first slide is visible. Okay.
Now, No, sir. Only first page is visible. still, Yes. 1 minute. Now is it visible? Yeah, it's now full page. Yeah. Now we are on the second slide, discussion agenda. Okay. Do you want me to repeat this? Is it now visible? Yes, sir. Taxation of goods as in basis? Yes, sir. Okay. Fair enough. So I think we have covered this primary things, that these are the goods of foods and dairy items which have been proposed to reduce. There is new concept. It is not new concept. It is earlier it was called as and where basis. Where has been removed, as is basis, wherein goods are being not value added by the trader. They are removed as such. Those have been benefiting. In case of some medicines required for special purpose have been exempted. Tobacco, I made this discussion. This tobacco screen is visible? Yes, sir. It is visible. Okay. So in tobacco, I have just told you that this entire new regime of taxation been introduced, which was earlier also available in the name of annual production capacity, which is being now proposed to be reintroduced. Modalities will come soon. Once it is come, we can have another discussion on that. In relation to sports utility vehicle, I was talking about. Sports utility vehicle, there are three primary conditions. Their length has to be 4000 mm, engine capacity have to be above 1500 cc, and ground clearance has to be there above 170 mm. So they are now changing the guard, wherein laden and unladen conditions have been taken into consideration. Maharashtra AAAR said nothing doing. Unladen height has to be considered for any vehicle to be called as a sports utility vehicle. So the things are being again tossed, and presently this is a proposal which I think it cannot be challenged, because once the government is in the mood to consider particular thing on laden basis, then it has to be done like that only. These are the few services in relation to launch of satellites, which have been exempt from the levy of taxation. We don't know really why they are so fascinated for exchange of letters, but now they have clarified in case of GTA, and they have also extended the date till Jan, that once the letter has been given, to opt for an option to levy tax at 12 or 5% or 5% RCM is available, and that has to be done only for the first time. And whenever the new proposal is there to change the modus operandi of the SSE, he can resubmit the letter. This is a long-standing explanation. A lot of litigation has been happening in earlier period also. That is a service provided by a director. In earlier regime, Service Tax Finance Act, there was a notification 30, wherein the word missing was in capacity of. Now we fail to understand, and we have really asked the officers also that, sir, you are the officer at office, but you are not the officer at home. At home, you could be father, husband, son, etc. So the role of a person is changing from place to place. So if I am a director, I can also be an individual at the same time. So individual providing services to the company cannot be covered under RCM. But these people did not agree to the contention, and they dragged all the SSE to litigation.
Now they are coming up after the period of almost 2012, 11 years. The notification was earlier 2012. Now they are coming up after 11 years, clarifying the situation in GST that the capacity has to be checked. If the director have provided property on a personal capacity, then RCM shall not be attracted. So this is a welcome move. Der hai durust hai. At least they have clarified the position so that if any litigations are going on, that can be now stopped or winded up. GST also we are facing the similar situations. In absence of personal capacity word from the notification, every service of the director either may be provided in personal, professional or otherwise capacity, if been asked to cover under RCM. Here, friends, we can argue with the department. We had one argument that I am being a chartered accountant, I am also being a director in particular company, and I have provided professional consultancy to the company, and I will charge 1 crore bill. Who shall pay the tax? It is me who is a provider of the professional services or company under RCA. To which there was no reply till now. But we thank department that they have clarified this position that personal capacity is now recognized. So this question of litigation is now going out of the thing. In relation to food, I don't know why they are so fascinated about food and what difference it will make if food is supplied along with the ticket and food is supplied separately at the movie theaters. Reason being very simple. If we go to a mall, we buy number of things. We buy items which may be charging to 18%. We may be buying items of 12%. We may be buying items at 5%. We may be buying items which are not chargeable to tax. And the mall shopping, they give you single bill, right? So the concept was when individual items are listed, there is no bill raised by any of the vendors, single bill item without distinguishing the items A, B, C, D. So when separate item is been mentioned, definitely it is a separate supply and definitely whatever tax applicable has to be made applicable. Now they are introducing this concept of food served at the cinema halls. Right, they say it is a restaurant and the tax will be 5% without ITC, provided that it is not supplied along with the movie ticket. So just imagine the situation wherein I am booking a movie ticket from my Book My Show and I am also ordering a food along with that, right? Then in that scenario, it will be taxed at the full rate. So we would be surprised that how good a composite concept can come up in this entire game of billing. Because reason is very simple. Even if I am buying a ticket online and ordering food at the time of booking a ticket, my invoice is going to show separate items, movie ticket item A and food item B. So unnecessary clubbing the things, it cannot be called as a mixed supply. It cannot be called as a composite supply because there are two different supplies. So unnecessary clubbing of things and making things more complicated for the people, this is going to create a big hassle for entertainment industry also. Normally now, as per this circular, the theater owners may plan out not to sell any foods at the time of booking tickets. They might be directly inviting the viewers to the food counter and order from them there themselves, so that it can be taxed at 5%. So this taste of composite supply is not being tasted properly, because if you mention two items in an invoice, two separate supplies in a single invoice, that does not become a composite supply. Now, big hue and cry. There was a case in relation to
actionable claim. Gamecraft. Gamecraft, wherein Karnataka High Court held that there was an online gaming being played, that is a rummy. Online game, it is in the name of online gaming and not offline gaming. So court have held clearly. It was earlier also being tested in Martin lottery case. It is been settled that in case of playing games, online or offline, if it is an actionable claim is outcome of the game or a speculation is not known at the time of entering into a transaction, can be considered to be actionable claim. So if it is an actionable claim, it is forming part of the definition of goods, whereby definition of goods, whereby it has been excluded. While entry 6 to schedule 3, telling thereby, if it is an actionable claim, we will term it not taxable and not within the purview of GST net, leaving gambling, betting side by side, wherein it has been termed that these are not game of chance or game of skill. These are the two terms which has been deliberately discussed in Gamecraft, and the game which has been under challenge before Karnataka High Court was rummy is being game of skill or game of chance. So this is a thing which definition includes actionable claim. Schedule 3 excludes actionable claims. Hence, duty is not applicable. This is other than lottery, betting, gambling, wherein it has been held and settled by Karnataka High Court that rummy, playing online, offline, that will not make any difference to taxability. It is a game of skill. If it is a game of skill, then it will form part of actionable claim. And if it is a game of skill, it is forming part of actionable claim. It is part of Schedule 3. Hence, no tax is leviable. DGGI in the case have raided the premises of Gamecraft. What was the dispute is, say for example, I want to play rummy. There is a wallet concept in this online all applications, wherein I am putting in some 1,000 rupees in my wallet, and whenever I play the game, say 100 rupees is being debited from my wallet. Once 100 rupees is debited, then my game starts. At the end of the game, if I am a loser, I will lose that 100 rupees, not 1,000 which I have put in the wallet. And if I win the game, some reward is going to come back to me. It may be 100 rupees back, 200 rupees back, 500 rupees back, or whatever the stake is there in the game itself. So it has been settled that rummy is not a game of chance. Rummy is game of skill. You play online, offline, that will not make any difference. So it will be part of actionable claim, hence not taxable. Now, the proposal of GST Council is that they will exclude this type of transactions from actionable claim definition, thereby making GST applicable on that. Presently, what is happening is, whatever 100 rupees is being used, GST is being already paid on that amount. Even trade is having no objection or no problem in paying the tax. Now the proposal is GST is to be levied on full value. If GST is to be levied on full value, that is, if you put 1,000 rupees in your wallet, GST is to be levied on those 1,000 rupees, irrespective of what is debit and what is coming out. Means, if I am losing a game and 100 rupees is going out,
deduction is not allowed. So it is being held. So trade is being contesting to pay the tax. There is no problem. We are ready to pay the tax. But the proposal is to make an amendment retrospectively from 1st July 2017, thereby undoing the judgment of Karnataka High Court and charging the tax. So the turnover of the company may be around 1500 to 2000, but the demand is of 21,000 crore rupees. So in that scenario, it has to be tested, checked how this retrospective amendment can be done, because in press release also and press note also they said that we are issuing a clarification only. The tax was ought to have been levied on full value, and that what had to be levied from 1st July itself. But the entire trade is having a different view. Even Karnataka High Court was also in favor of trade. So now this will create another litigation which will impact online industry to the great extent. And you can see Skill India and many such of flagship programs of the government going to the toss. So this was a thing that law amendment has been to include this type of game of skills, and they are moving out of actionable game. GST was already leviable, but it was leviable and paid on that 100 rupees component and not on 1000 rupees, the chip or the wallet amount which I am getting it deposited. The problem is full value, and that too from retrospectively without giving any deduction. So there is a big litigation, big haywire is already being created. That 28 we are ready to pay. Taxable value should be only the amount which is being used, that is in our example 100 rupees. Old cases government are going to fight, that has been already declared. And this clarification or proposal is a clarificatory in nature. So you cannot tax retrospectively. That has been held by a number of decisions, even including Supreme Court, that if any clarification is creating a new impact on taxes, it can only be prospective. It can never be retrospective. So the problem is, this is the reason why people are making a lot of shout in this, because in industry, the margin is only 20 to 30%. That is not a problem. We are, and they are telling that we are even ready to pay on full value, but retrospective amendment will kill the industry. That is a big problem which may be faced. Friends, these are the primary proposals of GST councils. Now there are some circulars which have been issued. We shall be discussing over the next 30 minutes in that. There is one circular, it is a welcome circular, 192, is been issued for the purpose of calculation of interest in case of wrongly availed and utilization of ITC. Now, this clarification is coming in the form by quoting an example of IGST. IGST is a case which is a component of C plus S. So this theory have been brought in the circular, and they have clarified that if you have taken 1 lakh rupees as an credit in IGST and wrong credit, invalid credit, ineligible credit, and that credit you have utilized, right? So interest become payable. But this circular says that if sufficient balance cumulatively C plus S is having, which is in excess of 1 lakh rupees, interest shall not be payable. So this is a welcome state. However, we are seeking one more clarification in this, that this logic can even be applied if the wrong credit is availed for CGST and balance is available in IGST. So theory is applicable equally on both the sides. So we have to wait for one more clarification in this case of interest. So this is one of the welcome move. Friends, now this circular 193
which many of us are thinking that it is an extension of Circular 183 earlier, which was a beneficial circular providing the credit to me irrespective of the fact it is being visible in my GST at 2A or not, subject to the condition that if it is below 5 lakhs, you have to give self-certified invoices, ledgers and payment proof. And if it is exceeding 5 lakhs, you have to add one more document is called CA certificate. Now coming to the problem, this 193 circular have been requested. 183 circular have been requested by trade and industry across length and breadth of the country to extend it up to 31st December 21. Now, what is this date? December 21. Actually, from 1st January 22, new rule 2B, new form 2B, static form, because 2A is a dynamic form. 2B was introduced, and section 16 have been amended by incorporating AA to subsection 2, wherein they were restricting the credit to the extent not visible online by and large. So wherever we face the litigation in audit or assessment, presently what we are litigating is that they are disallowing us the credit which is not available in 2A, right? They were not having legal backup to that. Section 16 was not supporting to this disallowance, which have been amended, and AA clause 2 subsection 2 was introduced, which was from 1st January 2022. So trade demanded that mistakes have been happening, mistakes have happened, you have considered our request and allowed us the credit on the basis of certification. This benefit of allowing of credit should be extended till December 20. Now friends, many of us have taken this circular 193 as a part of extension to 183, right? But friends, this is not the case herein. Exactly, they have done opposite what is being demanded. What they are doing is they have amended rule 36(4), wherein from 9th October to December 19, from January 20 to December 20, from January 21 to December 21, they have introduced a cap that whatever available in 2A, we will allow you credit to the extent of 120% of the eligible credits, right? So eligible credits was the word used in earlier regime, rule 36(4), which have been subsequently reduced to 110 and 105. So everybody was under the impression that this 193 will be the form of extension of 183. But friends, please read the circular very carefully. It is exactly the opposite what we are thinking, and the illustration has also been provided. Earlier, they were allowing the credit to the extent of 20%. अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब 20% भी सब्जेक्ट टू द सर्टिफिकेशन देंगे, 20 के ऊपर तो आप भूल जाओ. मतलब ओवरऑल क्रेडिट विच रूल 36(4) was allowing me without any certification work is now been restricted with the certificate from the vendors or from their CA, as the case may be. So please read this circular. We are making one more representation that 183 has to be extended as it is suo moto, mutatis mutandis, and it should not be changed, because 36(4) was allowing me the credit of 120% without any certification. Now wipe this circular 193. You are asking me to produce CA certificate or vendor certificate even within the limit of 120%. So practically, but not legally, they are making AA clause section 16 to AA effective from
9th October 2019. That is what our understanding is. So whatever credit available in 2A shall be allowed, and post in addition to 2A, if you want to avail, you have to collect the documents required as per 183 till December 19. So friends, this 193 is not in favor. It is in favor of actually department. And one more thing they have clarified, that benefit of this circular shall not be available in case you are not under assessment, audit, adjudication, and the matters which have already been closed. So I don't think so there is this clarification is required, because 2A cannot be made retrospectively introduced, which you are trying to do it from the in the shield of this circular. This example I have taken is this, that this is the illustration provided in the circular itself. There is a 3 lakh credit. You have also claimed 3 lakh credit. There is no difference. So there is no dispute. If you have claimed 5 lakhs against 3 lakhs, you are allowed additional credit of 60,000 only. That is 20% calculated on 3 lakhs. But this 60,000 after 193 circular shall be given to you only in the case when you provide necessary certifications from chartered accountant or self-certified copies. मतलब उसके ऊपर का 140 तो भूल जाओ, वो तो आपको मिलने वाला ही नहीं है. And whatever available in 2A, if you are claiming less, then there is otherwise no dispute to the case. This more circular 195. This 195 is in particular in relation to automobile industries. Earlier, they have not investigated on it. The matter of the fact is not known to these people, that how operations are being held or happening behind the curtain, which now they have dissected individual cases and they have clarified. But here also they have miscalculated few things, which I would like to highlight. One is they have clarified original OEM, original equipment manufacturer. These are the manufacturing companies. Whether OEM is required to pay GST on warranty parts which are being replaced. So it is being held and settled since very, very long time, decades, that once the car or any vehicle or any electronic goods are sold, those are already backed with 1 year, 2 year warranty inbuilt. So cost of warranty already been included in assessable value at the time of clearance. So during the period of this warranty, if anything happens, then there is no required to pay the tax. Even courts have settled these positions. Now they have clarified one more thing, which is welcome step, that in such cases, even OEM is not required to reverse the ITC. Now, what will happen to the distributors? They are also not required to charge anything. But if dealer is already having some material or things in his stock, and if that things or item is being used from the inventory for the purpose of replacement or repair or whatever the case may be, in such scenario, circular is being clarifying that dealer have to bill to the manufacturer with applicable taxes, and credit to the manufacturer shall be available. Now, one more fifth, there are 8 points which have been clarified. Are the service provided by dealer under warranty taxable? Yes. Reason is same concept where goods are being used from store, they will charge and OEM will take the ITC of that. Now, this is a surprise. This is a huge surprise, as in case of movie tickets. We know how the vehicles or electronic goods are sold. They are in particular bifurcating everything in the invoice. So every sale is a separate sale.
Making it in a single invoice does not make it a composite supply. That is being settled position since long time. Now they have confused, or they have tried to cover this warranty part along with the vehicle at the rate of 28%. Now, which was otherwise taxable at 18%. So they said, and they continues to say so, that if extended warranty is sold along with the vehicle, there is a warranty which is coming by default. So we are talking of the warranty in addition to the original warranty, that is called extended warranty. That is normally sold along with the vehicle or post sale of the vehicle before original warranty is getting over. So they are telling that if original extended warranty is sold along with the vehicle, मतलब जब आप कार खरीदते हो और कार के साथ 1 साल की वारंटी आती है, आप उसी टाइम पे बोलते हो कि भैया मेरे को 4 साल का एक्सटेंडेड वारंटी अभी दे दो और उसको आप बिल कर दो, आई एम रेडी टू पे. So such type of cases, they are telling that tax would be leviable on that extended warranty as was applicable in case of car, that is goods. Now, if extended warranty is sold at the time after the original sale of vehicle or electronics, then they say tax shall be applicable as the case may be, 18 or 28%. If it is in relation to goods, 28. If it is in relation to service, 18%. So the things, they are getting this confusion day by day, and this will be tested over the period of time. Friends, there is a huge litigation going on in case of holding subsidiary company shareholding. I am not taking much time herein. It is being settled now that this transaction shall not be covered within the ambit of GST. Otherwise, also there is absence of service in this case, which now they have recognized. There are few refund related issues. There is a rule called 89(4) and 5. Wherein in 84 there was a confusion in case of numerator denominator, FOB value used or shipping bill value to be used, which they have now be clarified that on both the sides, numerator as well as denominator, FOB value shall be used. So this problem is getting sorted out. And why this this circular 197, they have amended 125. 125, 135 and 139 circulars. Therein say that wherein it is, wherever it has been mentioned that refunds ITC have to be verified from form 2A, the word 2B shall be replaced. So from January 22 onwards, whatever refunds are being claimed or being processed, that shall be processed as per ITC available in GST 2B and not 2A. They are regularizing this 96A, which says that if you have raised an invoice in case of export and if you don't do export within the period of 3 months, and there is no inward remittance within the period of 1 year in case of exports, the benefit of zero rated supply cannot be made available, which they, I think, have been clarifying the position that benefit shall be available. They have only changed the way of filing refund claim in case of other category. There is not much change in this. So in refunds, they have done a better job, leaving this one part wherein refund ITC shall be calculated as per 2B and not 2A from 1st January 22. E-invoicing to government department, they have clarified by circular 198 that supplies made to the government department, many of the government department are registered just for the purpose of deposition of TDS. But if any service is being now supplied to these people, e-invoice is required to be made. I can take much time in this cross charge, but I would, due to paucity of time, I would like to go fast in this. They have, for the first time, distinguished between the internal generated credits and external purchased credits. Right?
Now, example is very simple, wherein you are buying a security services, that is externally purchased services. If security services is bought for particularly HO or branch or mix both, or at the time of entry agreement it is not known, then those are expenses which have been procured from outside. And there are some expenses as salaries. There is an employee in my company who is going on temporary basis to my branch and doing it necessary work, and he's coming back, or he's going to another branch and he's coming back. So the in case of this internally generated expenses, it is being settled long back that rule 28, under rule 28, valuation shall be considered as nil. And many of the corporates have missed this cross charge mechanism. Otherwise they have to raise an invoice on their branches. Now they are proposing to make mandatory ISD, input service distribution mechanism, wherein if any credit has been accumulated in HO, that has to be mandatorily deposited to mandatorily transferred to branches who are eligible for those credit. So this will add nothing but increase the compliance work, and this will add to the headache of getting more registration. This rule 28, there is a second provision available in rule 28, which says and confirms that the value shall be considered to be nil if ITC is full available. They are also proposing to delete this this proviso, which will create a headache and havoc in the market and nothing else. So they are making ISD mechanism mandatory prospectively, of course, in particular for the services procured outside the organizations. So inbuilt internally generated services like employee cost, even admin cost, internally generated admin cost can also be formed part of this cross charge with the value nil. So there is no dispute now being done, but this will increase the compliance majorly to the big corporates. There are another trade facilitations which we don't see happening very soon. They have proposed to introduce tribunals, which is long waiting demand of trade. Almost 6 years have been passed, but there is no light, or there is no ray of hope that tribunals are coming soon. So they have proposed to introduce the first bench of the tribunal in the state of Maharashtra. But we have to see how far this is going to be done. But the big draconian part herein is that section says and propose additional 20% of pre-deposit, which is part of proposal from many trade, industry and ICI also, that to file an appeal before tribunal, the earlier limit of 10% should be made available and not 30% as of now, which is forming part of law. So we see at least 1 to 1.5 years more these tribunals coming into the picture. There are some minor other changes which I'm going to annual return amendments which have been proposed earlier are continued for financial year 2022-23. There are number of states, there is no still uniformity available prevalent in case of issuance of orders. There are number of states who are issuing orders manually. There are number of states who are issuing order online. So in case the orders are issued online, appeal has to be filed online. And in case of manual, the appeals have to be filed online. So they are proposing to introduce a new rule, so to facilitate for temporary period to allow applicant to file an appeal manually. This is okay. Amnesty scheme for 499C and 10 been extended to 31st August. This is a welcome move with the imposition of penalty of 20,000 rupees per year. So if anybody is there who have not filed their annual returns, 9 and 9C both,
then in such cases, it is suggested to file that. Otherwise, 100 rupees per day of CGST, 100 rupees per day of SGST, 200 rupees liability per day is going on. It is running very fast. Friends, I would like to here add one more point. In case of 9C, department is proposing penalty under section 125 general penalty. But please note, 125 can be invoked only where the situation where particular penalty is not proposed in relevant section. In case of 9C, penalty is proposed under section 47. So 125 is not invocable in this case. So if you are having a case where department is seeking this 25,000 rupees penalty under 125 section, you can contest that. E-way bill for gold has been left over to states to decide whether they want to introduce or not. Registration process, I think, will not make any change. This circular will not help anything because the people who are actually making registrations are not following any circulars, right? We are making day in, day out registrations. Every day new query comes up. So this is going to continue. But for the purpose of facilitation, they are proposing if the SSE is a registered SSE and he is seeking another number, then physical verification have been done away with. If bank account is linked to my GSTN ID, then also the registration process has been simplified. Nothing more will happen, and this will, on paper, this will see to be a great help, but on field we have to see, wait and watch how much this will help. Sorry to interrupt, sir. Pardon? Sorry to interrupt, but we are left with 2 more minutes. So I am going to wrap up. I am going to wrap up. So there is a proposal to recover a demand which is for difference between 1 and 3B, and that can be issued by DRC 01B. Earlier they were not having mechanism to do that, but they have now come up with this. Same thing is happening with 3B, 2B difference. Now system based notices shall be issued, which has to be replied within a specified restricted time limit. Information sharing is nothing. They are coming up with a centralized data management system wherein SSE will be asked, जो हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी एप्लीकेशन आप मोबाइल में डाउनलोड करते हो तो वो डेटा शेयरिंग, डेटा बैकअप, उसके लिए टिक मारने का बोलते हैं, वैसा कुछ सिस्टम इधर आने वाला है कि भाई योर पैन बेस्ड इंफॉर्मेशन शैल बी मैनेज सेंट्रली. सो कभी आईबी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो उनको जीएसटी के पास आने की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो डेटा सब एसएससी का सेंट्रली मैनेज होगा एक जगह पे. सो wherever agencies required any information, they can collect. So I don't see this is not happening otherwise than this clarification also. It is otherwise also happening. उन लोगों ने इनका नाम दिया है अकाउंट एग्रीगेटर, but that is okay. Others decision is I think that is okay. So I have done with this circular part and proposals of 58 GST councils. Thank you very much. Thank you so much, sir. It was really an enriching session. You have touched upon almost all the aspects which has been happened in the recent 58 GST Council Meet. So thank you, and we would like to hear you often. Thank you. I request CA Hetal Kotak, moderator of the session 2, to take the session. Thank you, Hira. Thank you, Hira. We have CCM sir, CA Purushottam Khandelwal sir with us. He is a chairperson of CPE Committee, vice chairperson of Committee for Members in Entrepreneurship and Public Service, and convener of RBA Directorate of ICAI. He is having 25 years post-qualification experience in the field of audit, direct
tax and indirect taxes, and intellectual property rights. This year, he is devoted to fortifying CPE framework and guaranteeing quality across its entire operational spectrum. And this year, major focus would be on upgrading of CPE portal and mobile application for enhancement of the branding and professional competency for members. So we welcome you. Over to you, sir. Good afternoon, the respected faculty, CA Praveen Dhandaria ji, Shwetang Pandya ji, two moderator, Hital Gajera, Hital Kotak, Hiral Gajera, and the Director Secretary of the CP, Ajit Naji Tiwari. It gives me immense pleasure to be amongst you. This time, the ICA has given me chance to chair the committee for continuous professional education, and this committee has been set up by ICI for the striving and excellence in terms of standard of the professional service rendered by its member, with a view to enabling its member to maintain the requisites professional competition and ensure the high quality and standard in the professional service that rendered by the ICI has identified the CPE as a major area of the focus on the member. So my committee is monitoring the CPE requirement of the members, and we are bringing the various technology as the Hital Kotak says that we are coming with the mobile app. And this year, the rolling period of 3 years has been gone, and you have to comply CPE program in the calendar only. This year, we have taken various steps. Every Wednesday, we've decided to learning day, and in 3 to 5 period, timing of the 3 p.m. to 5 p.m. we are organizing every Wednesday the CPE programs. And this year we are bringing with some penal provisions those who are not, even though after continuing reminder, not willing to comply with the CPE requirements. So it's not to take any police giri, but we have to do something for the member. So the member has to operate, because the regulator wants that the member should be always updated, and whatever the financial statement signed by the member should be true and correct, not true and fair. So this is my humble submission. Those who are not attending CPE program, please attend the CPE programs. So all the physical mode CPE will be considered for the structured CPE, and this virtual CPE will be considered as unstructured CPE learning. So with this, the learned faculty Shwetang Pandya ji is here. He is the International Financial Gift City. So they will explain you. And the Praveen Bhai has rightly said about what is happening in the 50th Council meeting. And before few days, I got an opportunity to meet the State Commissioner, Mr. Samir Vakil. And they categorically told that कि जो प्रॉब्लम मेंबर्स को जीएसटी नंबर लेने में आ रहा है वो दूर हो जाएगा। जैसे अपने पासपोर्ट लेने जा रहे हैं और पासपोर्ट के लिए आपको एक ही बार पासपोर्ट ऑफिस में जाने का है और वहीं फिंगरप्रिंट्स देके सब डिटेल देके आने का, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। जो अभी जो हैरान कर रहे हैं ऑफिसर कि दे नहीं रहे, लास्ट डे पे क्वेरीज निकाल रहे हैं, वो सब निकल जाएगा। क्योंकि आपको जिसको भी अगर जीएसटी नंबर लेना है तो आपको एक ही बार उसके हेल्प सेंटर पे जाना पड़ा। जैसे अपने पासपोर्ट के लिए जा रहे हैं पासपोर्ट फैसिलिटेट सेंटर में, वहीं पे आपको आपके बायोमेट्रिक्स प्रिंट लेंगे, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है एट ए टाइम पूरा होगा, उसी के बाद वहां ऑफिसर को बैठा रखेगा, वो साइन करेगा, जो हैरेसमेंट चला जाएगा और बोगस भी दूर हो जाएगा। सो हम लोग भी फिजिकली ट्राई कर रहे हैं कि सरकार के साथ मिलके कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करें। विद दिस आई हैंड ओवर चार्ज टू दी हितल कोटक and go further. I am confusing between Hital and Hiral. Both I know Hiral Gajera very well and Hital Kotak. Both starting from there, so that is confusion. Thank you so much. Sir, Thank you so much, sir. Can I leave? Yes, Praveen, no problem, sir. No problem. There is a hearing schedule, so I have to rush a bit. Yes. May please. Thank you, please. sir. Thank you. Thank you. Thank you. We have eminent speaker for the second session, Sir Shwetang Pandya. He is a commerce graduate and a fellow member of ICAI with 23 years of experience in his profession. He has 20 years of additional teaching experience in the field of chartered accountancy course, and under his guidance and mentorship, more than 350 students have become successful chartered accountants working across the globe. He has held leadership roles and has been in the forefront in articulating group philosophy. We welcome you, sir. Thank you.
Screen share. देखा इस बना नहीं Okay. Okay. I think screen now. Noise. Yes, visible, Satang bhai. Okay. Thank you. Thank you, CA Institute Central Committee, as well as Purushottam Sarji, Gyan Chandra Misraji, and our fellow member, Hiral Gajera and Hetal Kota. I am here with my presentation, and my basic topic is GIFT City is a future gate of not only of India, but also of world from our point of view. Many times people ask me, what is actually GIFT City? As GIFT City's name is very famous, but what the actual ecosystem is there, what are the benefits are there, very few people are actually know. So always when I am defining GIFT City, I am telling one basic story and very simple story to everyone to understand what is GIFT City. Suppose I am giving 10,000 rupees my wife every day. And the same 10,000 rupees is given by my wife evening, returned back to me. And this process continue for 30 days. And if I am going outside my family and tell everyone that I am receiving 3 lakh rupees every month, every day evening, I am getting 10,000 rupees. My wife is also telling the same thing to the whole world that she is also receiving 3 lakh rupees and 10,000 every morning. Actually, we are not lying to anyone. Okay. And there is 6 lakh turnover in our family. But we well know that there is no meaning Sorry, of sir, that. your screen is, sorry, sir, your screen is frozen, sir. Okay. One. Slide is on first page only, I guess. Now? Yeah. Moving. Thank you. Moving. Then it's okay. So the question is that 6 lakh rupees turnover to our family has no meaning. But if husband and wife both, it is working. No issue. If husband may or Mary wife, anyone goes outside and earns rupees 10 rupees, then it has more importance compared to that 6 lakh rupees turnover. So this is the importance of that 10 rupees if it brings, I am earning from outside my family and with other people. So गिफ्ट सिटी has the same situation. अगर हम लोग कंट्री में एक दूसरे से जो कोई भी काम करता है, जो कोई भी टर्नओवर हमारा है 3 ट्रिलियन है, 3.5 ट्रिलियन है, it has no meaning. But if he earns 10 rupees or $10 from outside and brings it to India, then it has great importance. So basic purpose of GIFT City is nothing to bring the business from outside. At the same time, whatever the business is going from India outside, Singapore, Dubai, or Cyprus, or any tax haven part of the world, that need to be stopped. So GIFT City's basic purpose is to enhance the, they want to be one-stop solution. If GIFT City is going to be work, then any people who wants to connect with India, then they need to come to GIFT City and all the problems will sort out. Whether they want to invest, whether they want finance, whether they want to connect the people, professional people in India, whether they want any type of service, insurance service, banking service, any service. So government's basic purpose is to create a door of financial door for India to connect with whole world. So basic purpose of GIFT City is to create single-stop solution, one-stop solution for all international businesses and specifically for financial activities. And always I am telling that GIFT City is the biggest financial concentrated power of the world. I am repeating the word of the world. पूरे वर्ल्ड का जो कोई भी एक
स्पेसिफिक एरिया है 3.5 स्क्वायर किलोमीटर का जो सेज एरिया है गिफ्ट सिटी में. दिस इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेटेड पावर. व्हाई आई एम टेलिंग सो? अमेरिका में ऐसा होता है, यूएसए में, कि वहां कोई अलग कंट्रीज नहीं है. फॉर एग्जांपल चाइना या कुछ कंट्रीज के इंस्टीट्यूट्स वहां नहीं. और ऐसा हो सकता है चाइना में अदर कंट्रीज के इंस्टीट्यूट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हो, लेकिन एट प्रेजेंट इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड कि हर कंट्री से India's relationship is very good. And due to that reason, if you say any financial big name, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, Google is also coming here. Okay, Japanese bank, Dutch bank, Singapore Exchange, every international big player now is situated at Gift City. And कुछ आ चुके हैं, कुछ आएंगे. लेकिन Gift City will be a biggest financial concentrated power of the future world. And this is the basic role of the Gift City. So I think about Gift City's introduction, it is enough discussion to understand what is actually Gift Cities. Now, second part is Gift City's full form is a Gujarat International Financial Tech City, and it provides financial technologies solutions to the Indian businesses as well as international businesses. And if we want to understand in depth, then these are the key features of the Gift City. International Financial Service Center is known as IFSC in short form, but it provides every organization one platform which can enter in businesses in India, those who want to do business in India, or it is also equally useful to the people who want to do business internationally, just like us. Our company is also established in Gift City, and it is Svetar Consultancy Services Private Limited, and it provides all these solutions to our international clients as well as our corporate clients from India. So basic purpose is very simple, to provide a simple one location, one address where every type of financial problem and every type of technological problem relevant to finance will provide services to everyone. Multi-service special economic zone is also established in Gift City. Actually, Gift City total 3,300 acres area. Out of that 3,300 acres area, there is two parts. One is domestic part and second part is special economic zone. And actually that special economic zone is not only related to the financial services, it is multi-service special economic zone, and I am going to explain in next slides. We can provide from Gift City and what are the basic role of chartered accountants are here. We have a unified single regulator. We know that India में एक चीज क्या होती है कि कोई भी काम करना हो हमें 4 से 5 लॉ या 10 लॉ अप्लाई होते हैं. Every regulator is interfering and we need to fulfill compliances of so many regulators. But what the Gift City's basic benefit is, we have only single regulator, and that is IFSCA, International Financial Service Center Authority. आप ऐसा समझ लीजिए एक ही हमारे भगवान है, हमें उनके जो रूल बनाए, उनकी जो गीता बनी है उसी को फॉलो करना है. What we don't need to understand other laws and need to follow. और गिफ्ट सिटी का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो पार्ट ऑफ इंडिया नहीं है फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू गिफ्ट सिटी इज अ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. तो हमें जो बेनिफिट्स वी आर गेटिंग, व्हाट एवर द बेनिफिट्स फ्रॉम सिंगापुर, व्हाट एवर द बेनिफिट्स फ्रॉम Dubai, all that benefits we are getting in Gift City from tax point of view, from infrastructure point of view, from networking point of view. We are getting good network opportunities in Gift City internationally, as our international clients are approaching Gift City. And Gift City, once you are situated in Gift City, it is very easy to convince international businesses and international clients to get business and to activate their businesses in India also. Regulated by, allows international players to operate and boost India's presence in the global financial market. यही बेसिक पर्पस है गिफ्ट सिटी का कि सिर्फ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को ही गिफ्ट
नहीं लाया गया है, all the international institutes like Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, or even Google is going to be part of Gift City in future as a fintech company. So government's basic idea to bring the all participants, big participants of financial world must be present in Gift City, so we can showcase our businesses and our opportunities of India to the world from Gift City. Now we are going to discuss what are the areas of work in Gift City. Fund management is a basic area of Gift City. Actually, everything is going to be included in Gift City in future. At present, these are the major areas where Gift City is providing services to the international clients. Fund management. We are also working as a fund managers. We are also working in capital markets. So what the basic idea is, we are not providing one or two services. Fund management is a huge word. I'm going to discuss in next slide in deep every aspect of the these areas. First of all, fund management services is included in Gift City. Capital markets, NSE, BSE, now Gift Nifty is also introduced. And in future, many international exchanges are also going to be work from Gift City. And in near future, government is also planning and that some of the securities are also going to be listed from Gift City. Excuse me. Banking business यहाँ बड़ा क्यों हो रहा है? In Gift City, like SBI, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Dutch Bank, Japanese Bank. So banking business is also working at huge level. तो in future कोई भी बड़ा फाइनेंस किसी को X amount का चाहिए. Even New Development Bank, which is formed by major participants of Asian countries. एशिया की जितनी बड़ी कंट्रीज है उन्होंने मिलकर एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई है, वो भी गिफ्ट सिटी में सिचुएटेड है, जिसने ऑलमोस्ट ऑल हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, मुंबई का मेट्रो प्रोजेक्ट हो, अहमदाबाद का हो, दिल्ली का हो, वो सबका फाइनेंस न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किया हुआ है. तो बैंकिंग से बिजनेस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रोन. इंश्योरेंस कंपनीज, ऑल मेजर इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर. फिनटेक कंपनी, at present so many companies, but big giants are also coming to Gift City right now. Google ने अनाउंस कर ही दिया है कि वो गिफ्ट सिटी में आने का प्लान कर रहा है. शिप लीजिंग, एयरलाइन लीजिंग, एंसिलरी सर्विसेज, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ये सब सर्विसेज को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने का प्लान है, लेकिन हमारे पास अगर 1 घंटा है तो मैं मेजर पार्ट डिस्कस करना चाहूंगा फंड मैनेजमेंट का, कि उसको सीए कम्युनिटी के साथ बेटर रिलेशन, और सीए कम्युनिटी कैपिटल मार्केट और फंड मैनेजमेंट दो में अपने आप को ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे. तो मेरा बेसिक पार्ट ऑफ डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड्स में फंड मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट पर ज्यादा डिपेंडेंट है. ऑलरेडी वी नो हम बैंकिंग के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, इंश्योरेंस के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो चीजें बहुत सिंपल है. नए एरिया शिप लीजिंग भी है, एयरलाइन लीजिंग भी है और एंसिलरी सर्विसेज भी है. तो ये 3 भी हम थोड़े पार्ट में डिस्कस करना चाहेंगे. नाउ बेसिक रेगुलेटर इन गिफ्ट सिटी इज IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी. एक ही अथॉरिटी है. उन्होंने 2022 नवंबर में एक लॉ पास किया और वो लॉ के अंडर में हमारे जैसे सब ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं. और ऐसे ही ये लॉ को समझ पाएंगे कि व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन गिफ्ट सिटी अंडर दिस IFSC एक्ट. हम एज अ सीए प्रोफेशनल्स कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये लॉ के बाद आप लोग समझ पाएंगे. अब अंडर दिस लॉ 3 type of organizations can register themselves as FME. One is authorized FME, second is registered FME with non-retail, and registered FME with has retail license.
अगर मैं तीनों को बेसिक इंट्रोड्यूस करूं, ऑथोराइज्ड एफएमई वो है कि जो अपने ग्रुप का ही पैसा इंडिया में या इंटरनेशनली डिप्लॉय करना चाहता है कोई भी बिजनेस में, तो वो ऑथोराइज्ड एफएमई की तरीके से रजिस्टर्ड होगा, यानी ग्रुप ऑफ कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल पर्सन या फैमिली हो कि जो अपना टैक्स बेनिफिट भी लेना चाहता है और गिफ्ट सिटी से काम करके वो इंटरनेशनली कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया के कोई स्किल बेस्ड इन्वेस्ट करना चाहता है, तो दे नीड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज ऑथोराइज्ड एफएमई। सेकंड लाइसेंस होता है रजिस्टर्ड एफएमई, नॉन रिटेल। अब रजिस्टर्ड एफएमई नॉन रिटेल और रिटेल हैज ओनली बेसिक वन डिफरेंस। If someone has non-retail license, then their investors minimum ticket size is $150,000. But once someone has a retail license, then they have no minimum ticket size. They can get any amount from investor. तो रजिस्टर्ड नॉन रिटेल और रिटेल में एक ही डिफरेंस है। हमारे पास अगर रिटेल, हमारे पास नॉन रिटेल लाइसेंस है तो हम कोई भी फ्यूचर में AIF क्रिएट करते हैं या कोई भी वेंचर कैपिटल फंड क्रिएट करते हैं, जो इस पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं और सेकंड स्लाइड में भी उसी के बारे में मोर डिस्कशन है। तो मैं एट प्रेजेंट यहाँ ये डिस्कस आपसे कर ले रहा हूँ कि भाई जो कोई भी एक्टिविटीज हमें करनी है एंड वंस वी हैव नॉन रिटेल लाइसेंस, तो हमारा मिनिमम इन्वेस्टर का टिकट साइज $1.5 लाख होता है। अगर हमारे पास नॉन रिटेल रिटेल लाइसेंस है तो कोई भी मिनिमम टिकट साइज नहीं है। तो नॉर्मली क्या प्रोसीजर है कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स है कि जो 2.5 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को 25,000 से ज्यादा कस्टमर्स को ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जो ऑलरेडी $250 मिलियन का मैनेजमेंट कर रहे हैं उन्हीं को रिटेल लाइसेंस मिलता है। और जो हमारे जैसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 42 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर स्टेक होल्डर्स। तो हम कर क्या रहे हैं कि भाई वी आर नॉट अ बैंकिंग इंस्टीट्यूट एंड वी डोंट हैव 25,000 क्लाइंट्स हु आर कनेक्टेड डायरेक्टली इन पास्ट विथ अस, तो हमें जो लाइसेंस मिलेगा नॉन रिटेल लाइसेंस मिलेगा। नाउ क्वेश्चन इज, नॉन रिटेल लाइसेंस में हमारा लिमिटेशन जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया कि अवर इन्वेस्टर्स मिनिमम टिकट साइज इज $150,000, उसके अलावा कोई लिमिटेशन यहाँ नहीं होता है। अब अभी मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं, मैं उसमें बहुत डिस्कशन डीप में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज के बारे में बहुत डीप में जाऊंगा तो इट मे पॉसिबल कि हमारे 2-3 घंटे भी उसमें यूज हो सकते हैं। तो अगर गिफ्ट सिटी में कोई भी अपने आप को एफएमई रजिस्टर्ड करवाता है तो देयर आर ओनली 3 वे ऑफ लाइसेंसेस ऑथोराइज्ड, विच इज बेसिकली प्राइवेट फंडिंग। रजिस्टर्ड एफएमई हम बाहर से लोगों का रुपया ले सकते हैं, लेकिन देयर आर 3 कंडीशंस विथ अस। वन कंडीशन, minimum ticket size $150,000. Second condition, we need to get money non-Indian currency. हम इंडियन करेंसी में कोई भी पार्टिसिपेंट का पैसा नहीं ले सकते। अगर इंडिया से भी कोई व्यक्ति पर्सन want to invest in AIF or any I am going to discuss venture capital or fund on fund or any private equity और कुछ भी हम कलेक्ट करना चाहते हैं इंडिया से भी, तो उसको भी हमें पैसा नॉन इंडियन करेंसी में देना पड़ेगा। एंड देयर आर थर्ड कंडीशन विथ अस कि हम कोई भी एक्टिविटी लॉन्च करते हैं, वो AIF है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, वेंचर कैपिटल स्कीम है, रिस्ट्रिक्टेड स्कीम है या रिटेल स्कीम है, कुछ भी करते हैं तो उसकी मिनिमम टिकट साइज $5 मिलियन होती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें मिनिमम $1.5 लाख इंडिविजुअल एंटिटीज से लेना है। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, LLP भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और जो हम AIF क्रिएट करेंगे तो AIF जो क्रिएट होगा उसको अगर हमें डिप्लॉय करना है तो हमें वी नीड रिक्वायर्ड $5 मिलियन, यानी 50 लाख करोड़ रुपए, $50 लाख हमें एक AIF में क्रिएट करना पड़ेगा। फिर भी हम उसके बाद ही उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे कोई भी पर्पस जो लीगल इंडिया में। उसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहूँ तो एक सिंपल है, एक इन्वेस्टर होते हैं, एक यूजर ऑफ फंड होते हैं, उन दोनों के बीच हमें एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट करना है। अब वो जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है इज अ एंटिटी और वो कोई भी 3 में से हो सकती है। इट मे बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट मे बी अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, इट मे बी ट्रस्ट।
ये 3 में से कोई भी हमें रजिस्टर्ड करवाना ना। कोई भी पर्सन जो एआईएफ में इन्वेस्ट करेगा वो एआईएफ का मालिक है, यानी ओनरशिप ऑफ द एआईएफ इज विद द पर्सन हु आर इन्वेस्टेड इन एआईएफ। अब एआईएफ में हमें मिनिमम जिन जिन लोगों का पैसा लेना है, हमें हर किसी का मिनिमम टिकट साइज $1.5 लाख लेना है। $1.5 लाख इकट्ठा करके मान लीजिए हमने एक एआईएफ क्रिएट किया। अब वो एआईएफ क्या बिजनेस कर सकता है, वो कोई भी इंडिया में लीगल बिजनेस हो या अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, उस देश में जो लीगल बिजनेस हो उसके लिए हम एक एआईएफ क्रिएट कर सकते हैं ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एआईएफ, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मान लीजिए एक 250 करोड़ का प्लेन है जो हमें लेना है और हमें इंडिगो को या स्पाइस जेट को या एयर इंडिया को किराए पर देना है। अब वो बिजनेस से अच्छा भला रिटर्न मिल सकता है, फ्रॉम 14% to 16% पर एनम वो बिजनेस रिटर्न पॉसिबल है। अब पूरा आपको अगर गिफ्ट सिटी का कंसेप्ट समझना हो तो मैं सिर्फ उसको एयरलाइन लीजिंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके बाद हम शिप लीजिंग या बहुत कुछ ज्यादा भी डिस्कस कर पाएंगे। इन एयरलाइन लीजिंग से ही आप पूरा गिफ्ट सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझ पाएंगे। एट प्रेजेंट इंडिया में 700 प्लेन्स इंडियन ओनरशिप के अंडर, इंडियन जो एयरलाइन कंपनीज है वो 700 प्लेन को यूज कर रही है। आउट ऑफ दैट 700 ओनली 14 प्लेन्स आर लीज फ्रॉम इंडिया, 14 ही प्लेन। बाकी के प्लेन और डबलिन आयरलैंड से लीज हुए, क्योंकि आयरलैंड इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन व्हेन एयरलाइन बिजनेस इज कंसर्न। अगर एयरलाइन से कोई भी किसी को काम है, प्लेन किराए पर देना है, प्लेन किराए पर लेना है, उसके लिए फाइनेंस चाहिए, तो हर कोई दुनिया का पर्सन आयरलैंड पहुंच जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि नेक्स्ट 10 ईयर में इंडिया रिक्वायर्स 5000 प्लेन्स। इंडिया को 5000 प्लेन्स चाहिए। अगर वो 5000 प्लेन इसी रेशियो से अगर लीज हुए फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि जो हमारा डॉलर एक्सपेंस क्रूड ऑयल इंपोर्ट में उससे भी ज्यादा हमारा ये लीज रेंटल उससे भी ज्यादा हमारा कल की तारीख डली है नवीन जी। हेलो, रिक्वेस्टिंग अभी है टाइम आपके पास? म्यूट प्लीज। कल की तारीख डाल दो। देयर इज डिस्टर्बेंस विद मी। आप लोग सही तरीके से सुन पा रहे हैं? जस्ट अ सेकेंड सर। डन सर, डन डन, थैंक यू। अगर वो 5000 प्लेन सेम रेशियो से अगर बाहर से लीज होते तो हमारा जो डॉलर एक्सपेंस है वो क्रूड ऑयल से भी ज्यादा ये 5000 प्लेन का लीज रेंटल में हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का एयरलाइन से नहीं है, वो सेम प्रॉब्लम शिप लीजिंग में भी है, सेम प्रॉब्लम एनी कोई स्केल बेस इंडिया में काम होता है तो हर जगह यही प्रॉब्लम आएगा और हमारा डॉलर एक्सपेंस बहुत ही बढ़ता जाएगा। तो अब इसका पार्ट क्या हो कि वी कैन क्रिएट वन एआईएफ फॉर बाइंग। एक प्लेन बाय करने के लिए हम एक एआईएफ फॉर्म करेंगे एज एफएमई। तो हमारा काम क्या है कि हमने एक प्रोस्पेक्टस बनाया, उसमें हमने 2 चीजें अटैच की कि भाई दिस इज अ प्रोविजनल एग्रीमेंट ऑफ इंडिगो कि अगर हम उनको 8 साल के लिए कोई प्लेन किराए पर देते तो कितना लीज रेंट हमें देंगे, वो प्रोविजनल एग्रीमेंट होगा। दूसरा प्रोविजनल एग्रीमेंट हम अटैच करेंगे हमारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को कि भाई अगर हम बोइंग कंपनी से प्लेन खरीद रहे हैं तो इतने रुपए में हमें वो प्लेन, इतने डॉलर में ये प्लेन मिलेगा। और हमने शायद मान लीजिए एहतियात से 10 साल पुराना प्लेन एक्वायर करने की कोशिश की तो वो प्लेन हमें कितने में मिलेगा, उसका प्रोविजनल एग्रीमेंट होगा। अब वो प्रोविजनल एग्रीमेंट के साथ हम एक प्रोस्पेक्टस अटैच करेंगे हमारे इन्वेस्टर्स को और उनको कैलकुलेट करके समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप $1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो दिस मच शेयर होल्डिंग यू विल गेट ऑफ एआईएफ। और वो रिटर्न वो पैसों से हमने प्लेन लिया और ये प्रोविजनल एग्रीमेंट्स को हमने एग्जीक्यूट किया तो आपको 16% रिटर्न हर साल मिल सकता है और हम क्वार्टरली आपको ये रिटर्न दे पाएंगे। अगर वो ये प्रोस्पेक्टस हमें बनाना है, ये प्रोस्पेक्टस प्रोविजनल एग्रीमेंट हमें आईएफएससी अथॉरिटी को प्रोवाइड करना है। वो प्रोवाइड करने के बाद वो हमें एआईएफ के लिए परमिशन देंगे। वो एआईएफ रजिस्टर्ड होने के बाद हम इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं
वो पैसा कलेक्ट करने के बाद उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर वो $5 मिलियन है। अगर प्लेन की बात है तो वो 250 करोड़ का है, $5 मिलियन 42 करोड़ तो ऐसे ही हो जाते हैं। अगर हमने वो लीज रेंटल कंप्लीट किया और उसका जो कोई भी रेंटल इनकम हमें मिल रहा है वो अगर हमने अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को रिटर्न किया तो उनके लिए एग्जम्प्टेड। तो दिस इज द बेसिक एडवांटेज। अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है कोई भी एआईएफ में और वो एआईएफ कैटेगरी 1 और 2 में आता है और उससे कमाकर व्हाट एवर द इनकम हमारी हो रही है वो अगर हमने रिटर्न उनको की तो वो टोटली एग्जम्प्टेड है फ्रॉम इंडिया टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। उनके कंट्री में उनको जो टैक्स पे करना है वो पे करना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स हेवंस वर्ल्ड में बने थे, सिंगापुर है, दुबई है, वो एट पार गिफ्ट सिटी को बनाया गया कि कोई भी पर्सन कोई भी एआईएफ में इन्वेस्ट करता है वो फिर शिप लीजिंग के लिए हो, प्लेन लीजिंग के लिए हो, रियल एस्टेट के लिए हो या एजुकेशन के लिए, कोई भी पर्पज से हमने अगर इंटरनेशनली पैसा लिया और वो एआईएफ कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आता है और वो एग्जीक्यूट हमने किया और वहां से हमें जो कोई भी इनकम हुई वो इनकम हमने जो रिटर्न की इन्वेस्टर को, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, वो उनके लिए टैक्स फ्री है, एग्जम्प्टेड है फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। वही हमारी यूएसपी है और उस वजह से हम टैक्स ला सकते हैं। तो मैं नॉर्मली अपने क्लाइंट को onwards दुबई इज गोइंग टू चार्ज 10% कॉर्पोरेट टैक्स। उनके जो कॉर्पोरेट एंटिटीज है उनको 10% टैक्स दुबई ने चार्ज करना शुरू कर दिया है 1 जुलाई से और इंडिया 0% टैक्स चार्ज करने जा रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं जहां दुबई की गेम एंड हुई है वहां हमें अपनी गेम स्टार्ट की इंडिया की। तो ये जो पूरा स्कोप है वो हमें एंकरेज करता है कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर को पीच कर सकते हैं और उनसे पैसे लाकर ये क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर हो वो इन्वेस्ट करने के लिए उसको 2 ही चीज चाहिए, एक तो लीगल रूट चाहिए कि जिससे फॉरेन फ्यूचर में उसको कोई डिफिकल्टीज नहीं हो। तो ये इज अ फास्ट ट्रैक लीगल रूट। अगर कोई भी पर्सन कोई भी इंडिया में स्केल बेस्ड काम करना चाहता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए समवन हैज 250 मिलियन डॉलर 250 करोड़ रुपए है और उसको प्लेन लेके इंडिगो को लीज करना है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गिफ्ट सिटी से क्या फायदा है और अदर देन गिफ्ट सिटी वो करना चाहेगा क्या होगा। अगर वो 250 करोड़ रुपया प्लेन लेना चाहता है, शिप लेना चाहता है और इंडिया में डिप्लॉय करना चाहता है अदर देन IFSC ऑथोरिटीज परमिशन और गिफ्ट सिटी के बिना, तो उसको होगा क्या, उसको फेमा अप्लाई होगा, उसको RBI अप्लाई होगा और उसमें उसके 10 से 11 महीने कॉम्प्लायंसिस में, प्रोसेस में, परमिशन में, सब चीज में चले जाएंगे। एट द सेम टाइम वो लीज करने के बाद जो उसको रेंटल इनकम मिलेगी वो रेंटल इनकम भी उसके लिए टैक्सेबल है। हाँ, डबल टैक्स टीटी का एडवांटेज उसको मिलेगा, जो टैक्स इंडिया में पे किया है वो टैक्स उसको उस कंट्री में, अपने कंट्री में नहीं पे करना पड़ेगा, दैट पार्ट ऑफ अमाउंट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, अगर कोई दुबई, सिंगापुर, साइप्रस या कहीं और से जो टैक्स हेवन पार्ट है वहां से इन्वेस्ट करता है तो उनकी कंट्री में तो टैक्स 0 है, तो इंडिया में पे किया है वो तो उसको एग्जम्प्टेड कहीं मिलने ही वाला नहीं है। तो दिस इज द रीजन कि वो लोग फिर इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं करते और अगर करना चाहेंगे तो भी उनका 10 से 11-12 महीना चला जाता है और कॉम्प्लायंसिस उनको पूरी ब्यूरोक्रेसी सिस्टम से पास ऑन होना पड़ता है, फिर वो काम कर पाते हैं। तो यही रीजन था कि ये जो मैंने कहा 700 में से सिर्फ 14 ही प्लेन इंडिया से लीज हुए। अब मान लीजिए सेम चीज हम एआईएफ रूट थ्रू एज अ फंड मैनेजमेंट एंटिटी हम करना चाहते हैं, तो किसी के पास जो 500 करोड़ रुपया है हम एक एआईएफ रजिस्टर्ड करवाएंगे, वो एआईएफ 10 to 15 डेज में गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड हो सकता है। उसके लिए हमें 11-12 महीने वेट करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वंस वी आर गेटिंग एफएमई लाइसेंस, हमें एफएमई लाइसेंस अगर मिला है तो हमारा कंपनी का केवाईसी हो चुका है। अब एआईएफ क्रिएट करते वक्त एज अ मैनेजर हमारा कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है। ओनली वी नीड टू प्रूव टू IFSC ऑथोरिटीज दैट हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो इंडिया में लीगल है और हम जहां से पैसा ला रहे हैं उसका सोर्स क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें IFSC को देनी है। अगर ये 2 चीज हमने फुलफिल की तो 12 से 15 दिन में हम एआईएफ जो रजिस्टर्ड करवाना है उसका प्रोसेस कर सकते हैं। वो 500 करोड़ रुपए डॉलर टर्म में, नॉन इंडियन करेंसी टर्म में हम वो जो एआईएफ का अकाउंट गिफ्ट सिटी में खुला वहां ट्रांसफर कर सकते हैं और वही रुपए से
हम प्लेन खरीद के अगर हमने इंडिया में लीज किया तो ये पूरा प्रोसेस हम 12 से 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन गिफ्ट सिटी के बाहर के रूट से ये करना चाहता है तो उससे 10 से 15 महीने लग जाते हैं। एट द सेम टाइम उसको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, वो टैक्स उसके कंट्री में उसको सेट ऑफ मिलेगा, हमारे केस में उसको टैक्स पे ही नहीं करना है। तो ये एडवांटेज है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि गिफ्ट सिटी एंड IFSC फंड मैनेजमेंट रेगुलेशन इज अ 16-track express highway to bring international fund in India. एंड माइंड वेल इट इज, हम AIF सिर्फ इंडिया के बिजनेस के लिए ही क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम दुबई के भी कोई प्रोजेक्ट के लिए, हम श्रीलंका के भी कोई प्रोजेक्ट के लिए, दुनिया के कोई भी पार्ट के कोई भी प्रोजेक्ट के लिए हम गिफ्ट सिटी में AIF क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द ओनली रीजन कि मैंने कहा कि भाई गिफ्ट सिटी इज अ फाइनेंशियल गेट ऑफ नॉट ओनली ऑफ इंडिया, इट इज फाइनेंशियल गेट ऑफ होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का ये फाइनेंशियल गेट। तो कहने का मतलब है कि हम AIF सिर्फ इंडियन स्केल बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ही क्रिएट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम इंटरनेशनल बिजनेस के लिए भी या इंटरनेशनल कोई भी छोटा बड़ा प्रोजेक्ट हो उसके लिए भी गिफ्ट सिटी में AIF क्रिएट कर सकते हैं। तो नाउ क्वेश्चन इज, मैं समझ सकता हूँ कि अगर किसी को कोई क्वेरीज होगी तो आई एम एक्सपेक्टिंग आप एंड में रेज कर पाएंगे। तो मैंने इतना क्लियर कर दिया कि जो AIF है वो कोई भी पर्पस के लिए क्रिएट हो सकता है। इंडिया के लिए क्रिएट करते तो इंडियन लॉ अप्लाई होगा, हम इंडिया के बाहर की कंट्रीज के लिए कोई AIF क्रिएट करते तो वो पार्ट के लिए वो लीगल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम AIF क्रिएट कर सकते हैं। AIF क्रिएट करने के बाद हम इन्वेस्टिंग नेटवर्क को, हमारे जो पॉसिबल इन्वेस्टर्स है उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनसे पैसे लाके हम AIF में कलेक्ट करके अगर वो 5 मिलियन प्लस रुपीस है, 42 करोड़ से ज्यादा है, तो हम कोई भी लीगल बिजनेस के लिए उसको डिप्लॉय कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट को टैक्स फ्री मिलता है। अब एज अ फंड मैनेजर्स हमारा काम क्या है? अब CA लोगों का रोल यहाँ एस्टेब्लिश होगा। अब मान लीजिए हमने एक AIF क्रिएट किया और उससे एक प्लेन लीज करके इंडिगो को किराए पर दिया, तो हमें हर AIF ऑडिट करवाना है CA फर्म्स से, उसके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कॉम्प्लायंसेस करना है, वो तो सब करना ही करना है, लेकिन क्वार्टरली ऑडिट हमें करवाना पड़ेगा। और वो जो क्वार्टरली ऑडिट है उसका रिपोर्ट हमें 3 लोगों को सबमिट करना है, एक RBI को, दूसरा IFSC को, और तीसरा जिन पर्सन्स ने हमारे AIF में इन्वेस्ट किया है उनको। अब होगा क्या, अगर कोई भी AIF क्रिएट हुआ है तो उसमें एक्चुअली 4 पार्टीज, एक इन्वेस्टर है, एक बिजनेस है जहां वो पैसा यूज हो रहा है, तीसरा IFSC अथॉरिटी है, और चौथा फंड मैनेजर्स है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंड मैनेजर्स की ही है कि भाई हमें 3 चीजों का पूरा ध्यान रखना है। सोर्स ऑफ फंड क्या है? तो अगर गिफ्ट अथॉरिटी हमसे मांगती है कि भाई ये AIF में ये जो पैसा X कंट्री से आया है, वो जिस अकाउंट से आया वो अकाउंट का हमें स्टेटमेंट चाहिए। अगर IFSC अथॉरिटी ने हमसे मांगा तो हमें 48 आवर्स में वो सोर्स अकाउंट का स्टेटमेंट IFSC अथॉरिटी को देना है। उनका कोई भी एक्सप्लेनेशन अगर IFSC अथॉरिटी मांगती है तो हमें प्रोवाइड करना है। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने क्लाइंट से एक डीड लिखवा लेते हैं जिसमें हम उनसे NOC लेते हैं कि अगर हमने आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा सोर्स ऑफ अकाउंट का और आपने अगर हमें 24 आवर्स में नहीं प्रोवाइड किया तो आपका जो पैसा AIF में है वो सीज हो जाएगा, हम विड्रॉ करके वो पैसा आपको रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन, इतने छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शन को अगर हम इग्नोर करें, एक्चुअली वो रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, वो बेसिक कॉम्प्लायंसेस है। उसके लिए एज ए FME एंटिटी हमें कोई बड़ी चीजें करनी नहीं पड़ती है। लेकिन ये करने से हमारा फायदा ये है कि हम 15 दिन में इंटरनेशनल क्लाइंट का फंड को अगर हम लाए तो हम 15 दिन के अंदर अंदर वो पैसा इंडिया में डिप्लॉय कर। पास्ट में AIF क्रिएट होता था RBI के अंडर में, सेबी के अंडर में, उसमें 15 दिन में कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये चीज 15 दिन में हो सकती है। अब जो कोई भी ऐसा हो सकता है कि एक AIF बना उसमें 50 या 100 या 500 लोगों का पैसा हो, तो वो 500 लोगों के पास अपना मैनेजमेंट राइट नहीं है। वो AIF का मैनेजमेंट राइट जो फंड मैनेजमेंट एंटिटीज रजिस्टर्ड हुई है
और जिसने ये क्रिएट किया है उनके पास वो मैनेजमेंट राइट है, और वो राइट के अगेंस्ट में उनको दो चीज फुलफिल करनी है। सोर्स ऑफ फंड के अकाउंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, दूसरा उनको क्वार्टरली ऑडिट करना पड़ेगा। और ऑडिट में एक ही चीज का इंपॉर्टेंस है कि जिस पर्पज से आपने पैसा लिया उसी पर्पज से पैसा यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वही सीए फर्म्स को ऑडिट करने के बाद कहना पड़ता है। तो अब आपको एक सिंपल में स्केल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 10 साल में 5,000 प्लेन इंडिया में आने वाले हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 4,000 से ज्यादा प्लेन गिफ्ट सिटी थ्रू लीज होंगे। अगर वो 4,000 प्लेन गिफ्ट सिटी थ्रू लीज होते हैं तो आपको 4,000 इंटू 4 करना है, फिर क्वार्टरली ऑडिट करना पड़ेगा। तो 16,000 ऑडिट units will be created only from plane leasing. Similarly, अगर शिप लीजिंग हुआ है तो वो भी एवरी शिप इज अ सेपरेट एंटिटी। अगर हमने एजुकेशनल पर्पज से मान लीजिए कि गिफ्ट सिटी में 20 यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू कम फ्रॉम वर्ल्ड, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है वो गिफ्ट सिटी में आ रही है। अब वो हर गिफ्ट सिटी में जो यूनिवर्सिटी आएगी हम उनके लिए भी एक सेपरेट एआईएफ क्रिएट कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आ रही है और उसका पॉसिबल इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ रुपए का है, तो हम उसका एक एआईएफ क्रिएट करेंगे। वो एआईएफ क्रिएट करने के बाद जो कोई भी इन्वेस्टर्स अवेलेबल है वर्ल्ड में, जिसका नेटवर्क हमने या कोई भी जो एफएमई एंटिटीज है उनका काम ही है कि वर्ल्ड वाइड अपना इन्वेस्टर नेटवर्क क्रिएट करें, तो हम उनको टीच कर सकते हैं भाई आप अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है अगर उस इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1% वो एआईएफ का शेयर होल्डिंग मिलेगा। अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर को लाते हैं तो वो टैक्स फ्री है। तो वो मेन यूएसपी है गिफ्ट सिटी की कि जिससे हम बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। अब इस तरीके से हम 500 करोड़ कलेक्ट किया तो वो पैसा हम कोई भी पर्पज, जैसे मैंने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए एआईएफ बन सकता है तो उसका भी क्वार्टरली ऑडिट करवाना पड़ेगा। गिफ्ट सिटी में अगर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है वो 250 करोड़ से कम का नॉर्मली नहीं होगा, 230 करोड़ मिनिमम साइज होती है, क्योंकि 5 लाख स्क्वायर फीट से कोई भी छोटा प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी में नहीं होगा। तो अब 230 करोड़ का अगर हमने कोई भी एआईएफ क्रिएट किया तो उसका भी क्वार्टरली ऑडिट करवाना है। तो ये लोगों का यहाँ पर्पस क्या हो जाता है कि जितने भी एआईएफ क्रिएट होंगे गिफ्ट सिटी में फ्यूचर में, वो हर एआईएफ को अपनी सीए फर्म अपॉइंट करनी पड़ेगी और उनको क्वार्टरली ऑडिट रिपोर्ट उनसे लेना पड़ेगा और वो ऑडिट रिपोर्ट आपको सबको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एक बड़ी इकोसिस्टम गिफ्ट सिटी में प्रेजेंटली हो ही रही है, लेकिन फ्यूचर में उसका स्कोप सबसे ज्यादा होगा क्योंकि आप 3.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में और गिफ्ट सिटी के 3300 एकड़ एरिया में जो धंधा अचीव कर पाएंगे एज अ सीए प्रोफेशनल, जो प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी अचीव कर पाएंगे, आप दुनिया के कोई पार्ट में उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकेगी आपको। तो इसीलिए मैंने एक वर्ड यूज किया था कि गिफ्ट सिटी विल बी अ बिगेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फाइनेंशियल पावर ऑफ द वर्ल्ड, कि आपको बहुत छोटी जगह में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मेरा नेक्स्ट पार्ट है, प्रिसाइज पार्ट है कि गिफ्ट सिटी में हम एज अ सीए प्रैक्टिशनर कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में जाता हूँ। एक ये पार्ट डिस्कस करना रह गया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एफएमई लाइसेंस होल्डर कैन क्रिएट देयर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड। फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड जस्ट 2 वीक पहले ये प्रोविजन क्रिएट हुआ है और इसका इंपॉर्टेंस आप अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है और ये गेम चेंजिंग रूल हो सकता है इंडिया के लिए और गिफ्ट सिटी के लिए। कोई भी फैमिली फाउंडेशन जो $10 मिलियन से ज्यादा अगले 3 साल में इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है, वो अपने आप को गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड करवा सकता है। आप इसमें विराट कोहली या कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जिनके पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पॉसिबल हो, तो हम उनको पिच करके ये समझा सकते हैं कि भाई आप गिफ्ट सिटी में अपना फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट करिए जिसमें आपको अगले 3 साल में $10 मिलियन इन्वेस्ट करने, और वो इन्वेस्ट आप कहाँ कर सकते हैं, तो इंडिया के कोई भी बिजनेस इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो पैसा आपको गिफ्ट सिटी में ही इन्वेस्ट करना है, आपको सिर्फ फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड का जो ऑर्गेनाइजेशन उनको रजिस्टर्ड गिफ्ट सिटी में करवाना है
उसका टॉप मैनेजमेंट गिफ्ट सिटी में बैठेगा और उसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो गिफ्ट सिटी से होगा। आप पैसा कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं, आप प्लेन ले सकते हैं, आप कोई बिजनेस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते, कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते। वो इन्वेस्टमेंट से जो ये फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड को बिजनेस इनकम होगी, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू जो बिजनेस इनकम होगी, वो बिजनेस इनकम 15 साल में से 10 साल तक एग्जम्प्टेड, जो हमारा बेसिक फ्लो है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, रेंटल इनकम, बाकी सब टैक्सेबल है, बिजनेस इनकम एग्जम्प्टेड है। अब इसका आप मतलब समझिए, जितने भी फैमिली दुनिया में, इंडिया में तो है ही, दुनिया में जिसके पास 100 करोड़ से ज्यादा रुपीस है, $10 मिलियन से ज्यादा रुपीस है, और वो कोई इंडिया में काम करना चाहता है, तो उसको बेनिफिट यही होगा कि वो गिफ्ट सिटी में आए। गिफ्ट सिटी में आने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन को फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड के अंडर में रजिस्टर्ड करवाए और उसके थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करे। अगर वो उसके थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करेगा और जो कोई भी इन्वेस्टमेंट किया उसमें से जो बिजनेस इनकम होगी वो उनके लिए 15 साल में से कंटिन्यूअस 10 ईयर वो कोई भी सिलेक्ट कर सकता है और वो एग्जम्प्टेड है। तो ये प्रोविजन अब अपॉर्चुनिटी क्या क्रिएट कर रहा है कि हमारे पास जो अल्ट्रा हाई नेटवर्क क्लाइंट्स है ये कम्युनिटी के पास, उनको हम पीच कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि अगर आप ये चीजें गिफ्ट सिटी थ्रू करेंगे तो आपको टैक्स का बहुत बड़ा और मेजर बेनिफिट मिलेगा। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एफएमई रजिस्टर्ड करवाने के बाद ये सब चीजों को वर्ल्ड वाइड पीच कर सकते हैं। इंडिया में तो पीच कर ही सकते हैं, वर्ल्ड वाइड पीच कर सकते हैं और वहां से हम अपने बिजनेसेस ला सकते हैं। और जितने भी हमने एआईएफ क्रिएट्स किए वो सब एआईएफ का मैनेजमेंट राइट हमने अगर क्रिएट किया है तो वो फंड मैनेजमेंट एंटिटी के पास मैनेजमेंट राइट होगा और उन्हीं को फिर ऑडिट फर्म अपॉइंट्स करनी है, उन्हीं को अकाउंट मेंटेन करना है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है, हम प्रॉफिट शेयरिंग भी चार्ज कर सकते हैं, हम फिक्स रिटर्न भी ईआईएफ का चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस होती है। मैं कुछ कंडीशन का एग्जांपल देता हूं। जैसे फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड बनाना है तो उसकी एक कंडीशन है कि आपको 90% प्लस इन्वेस्टमेंट एक ही फैमिली का होना चाहिए, वो ग्रुप का हो नहीं सकता है। हाँ, अगर आप जो एक फैमिली के मेंबर्स नहीं है तो आप एआईएफ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एआईएफ थ्रू अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे तो उसमें फिर वो 15 साल में 10 साल टैक्स एग्जम्पशन वाला प्रोविजन इंडियन क्लाइंट्स के लिए नहीं, इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए तो एग्जम्पशन है ही है। लेकिन अगर कोई इंडियन फैमिली चाहती है कि हमें 82 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो उनके लिए गिफ्ट सिटी विल बी अ बेस्ट प्लेस टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स और वहां अपनी हेड ऑफिस बना के वो फिर इंडिया में कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो उनको एग्जम्पशन मिलेगा। तो ये 90% का एक कंडीशन है। सिमिलरली एआईएफ क्रिएट होता है तो उसमें $5 मिलियन का कंडीशन है, एक एफआईएफ क्रिएट होता है तो $10 मिलियन का है। ऐसे प्रीसाइज कंडीशंस बहुत सारी है, लेकिन अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो आप गिफ्ट सिटी में एआईएफ थ्रू कोई भी लीगल बिजनेस वर्ल्ड में कर सकते हैं और पर्पस एक ही है कि आपको स्केल बेस्ड काम करना है। आपको इन्वेस्टर भी स्केल बेस्ड लाना है, $1.25 करोड़ रुपए का, $1.5 लाख का, और आपको एआईएफ थ्रू इन्वेस्टमेंट भी स्केल बेस्ड करना है $5 मिलियन का। यानी पूरा पर्पस है कि आपको लोअर इकोनॉमी को टच नहीं करना। जो 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनको आपको पीच नहीं करना है। एट द सेम टाइम जो 42 करोड़ से कम के प्रोजेक्ट्स है उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि आपको इन्वॉल्व होने के लिए मिनिमम टिकट साइज $5 मिलियन है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अब इंडियन इकोनॉमी में 2 लेयर्स बन गए हैं, एक लेयर $5 मिलियन के ऊपर का और एक लेयर $5 मिलियन के नीचे का। तो जो ऊपर का लेयर है अगर वो गिफ्ट सिटी थ्रू एग्जीक्यूट होगा तो उनको बहुत अच्छे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, फास्ट ट्रैक सर्विसेज मिलती है, सिंगल यूनिफाइड रेगुलेटर्स मिलते हैं। और रेगुलेटर, आपको ये चीज भी समझनी जरूरी है, इंडिया में रेगुलेटर्स अलग अलग जगह बैठते हैं। कुछ रेगुलेटर्स सेबी टाइप है, वो मुंबई में है, कुछ रेगुलेटर्स दिल्ली में होते हैं। अब गिफ्ट सिटी में फायदा क्या है कि गिफ्ट सिटी हैज ओनली वन रेगुलेटर और वो भी रेगुलेटर गिफ्ट सिटी में ही है। तो हमें अगर कोई परमिशन लेनी है, हमें कोई प्रॉब्लम्स है तो हम चल के ऑफिस जा सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑफिस हीरानंदानी में है और ये रेगुलेटर्स की ऑफिस
हमारे जस्ट 50 मीटर अवे है, तो हम चल के वो रेगुलेटर को मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नो लीकेज ऑफ टाइम, नो लीकेज ऑफ करप्शन, कोई भी चीज बचती नहीं है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होता है। अगर किसी को 500 करोड़ रुपया इंडिया में डिप्लॉय करना है तो हम लोग वो 15 दिन में कर सकते हैं, अगर उसका सोर्स लीगल हो और उसका यूज लीगल हो। तो ये जो फास्ट ट्रैक अपॉर्चुनिटीज है वही इंडिया को फ्यूचर में स्पीडी बनाएगा, इंडियन ग्रोथ को स्पीडी बनाएगा, और गिफ्ट सिटी थ्रू ये सब पैसा मिल सकता है। हाँ, ऑलमोस्ट मैंने ये स्लाइड को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब कोई भी एआईएफ रूट थ्रू ही पैसा डिप्लॉय हो सकेगा, और वो एआईएफ एफएमई ऑर्गेनाइजेशन सी क्रिएट कर सकेगी, और ये एआईएफ 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। जो सेबी में कैटेगरी 1, 2, 3 है, आरबीआई में वो सिमिलर कैटेगरीज है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि कैटेगरी 1 और 2 के लिए टैक्स प्रोविजन और एग्जम्पशन अलग है, और कैटेगरी 3 के लिए अलग है, और डिपेंड ये करता है कि कौन पैसा लगा रहा है। अगर कैटेगरी 1 और 2 का एआईएफ क्रिएट हुआ और इंटरनेशनल क्लाइंट ने पैसा लगाया है तो उसके लिए एग्जम्प्टेड। लेकिन इंडियन क्लाइंट ने अगर वो पैसा लगाया है तो इंडियन क्लाइंट को नॉर्मली जो टैक्स चार्ज हो रहा है वो टैक्स चार्ज होगा, उसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है। तो बेसिकली गिफ्ट सिटी में जो एआईएफ क्रिएट होते हैं, टैक्स हेवन इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए है, इंडियन क्लाइंट्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एआईएफ रूट थ्रू उनको जो बिजनेस इनकम है, कोई भी इनकम रिसीव होगी, वो एज पर इनकम टैक्स लॉ इंडिया में टैक्सेबल है, क्योंकि वो इंडियन रेसिडेंट है। तो इंडियन रेसिडेंट का हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट जानते हैं, अगर वो मून पर से भी पैसा कमाता है टैक्सेबल है, तो गिफ्ट सिटी से कमाएगा वो तो टैक्सेबल रहेगा। तो ये मैंने बात की एआईएफ कैटेगरी 1, 2, 3 फॉर इंडियन क्लाइंट्स। अगर इंटरनेशनल क्लाइंट है तो उसको कैटेगरी 1 और 2 में जो अर्निंग होगा वो एग्जम्प्टेड है, कैटेगरी 3 में जो अर्निंग होगा वो टैक्सेबल है, और वो हाईएस्ट टैक्सेबल है 42% टैक्स। अगर हमने कोई एआईएफ क्रिएट किया और वो एआईएफ का पैसा डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और उससे जो अर्निंग हुई वो अर्निंग पर हमें 42% टैक्स पहले ही इंडियन गवर्नमेंट यानी इनकम टैक्स पे कर देना है, और उसके बाद जो उनको हम रिटर्न करेंगे वो टैक्स फ्री है, लेकिन 42% टैक्स डिडक्ट होता है। अगर हम कैटेगरी 1 और 2 में इन्वेस्ट करेंगे तो कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होता है। तो ये टैक्स बेनिफिट्स है, और फ्यूचर में अगर पॉसिबल होगा तो हम हर एक के बारे में एक इंडिविजुअल वेबिनार भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डीप में जाएंगे तो हमारा टाइम बहुत कम पड़ेगा। अब मेरे पास 10-15 ही मिनट है, तो सीधा मैं वो पार्ट पर आ जाता हूँ कि व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो ये चीजें मैंने कही उसमें। तो मैं पहले ही और एक स्लाइड भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सब रोल तो है ही, लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट ये रोल को मानता हूँ। जब हम सीए कम्युनिटी से बात करें, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट थ्रू 350 स्टूडेंट सीए हो चुके हैं, तो मैं ऑलवेज मेरा रोल सीए कम्युनिटी में एक माँ का मानता हूँ, मदर का, जिसने 350 सीए बच्चे पैदा किए हुए। तो मैं ऑलवेज एक चीज समझता हूँ, सीए बिजनेस में एक सबसे बड़ी गलती, ट्रेडिशनल गलती हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम कॉम्प्लायंस बिजनेस में ही अपना रोल ढूंढते हैं कि भाई कहाँ ऑडिट करना है, जो कंपलसरी काम करवाना पड़ता है वो हमारा धंधा क्या है, वही हमारा अप्रोच रहता है। लेकिन मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि कॉम्प्लायंस से जो इनकम होती है ना, वो सुपर प्रॉफिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो क्लाइंट हमारे पास आता है वो मजबूरी से आता है, उसको हम पसंद है, हमारी सर्विस पसंद है, उस वजह से नहीं आता है। अगर इस तरीके का बिजनेस हो तो वहां क्लाइंट जो मिनिमम पे करना पड़ेगा वही करेगा, खुश होके, कोई 4 पैसे ज्यादा आपको कभी नहीं देगा। लेकिन अगर आप वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वहां पैसा होता है। तो हम सीए के बिजनेस में 2 चीज कर सकते हैं। कॉम्प्लायंस वाला काम तो गिफ्ट सिटी में है ही है, वो क्वार्टरली ऑडिट करवाना है, अकाउंट्स मेंटेन करना है, बुक कीपिंग करना है, और लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो तो काम है ही है। हम अपना रोल ये समझ सकते हैं कि हम कैसे अपने क्लाइंट को ग्लोबल होने में मदद कर सकते हैं। जो प्रेजेंट हमारे क्लाइंट इंडियन है उसको हम कैसे ग्लोबल लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर वो कोई मैन्युफैक्चरर है
तो उसको हम गाइड गिफ्ट सिटी थ्रू कर सकते हैं। यही बिजनेस हम करते हैं, सिर्फ हम कॉम्प्लायंस बिजनेस में नहीं है, हम उसको मैनेजरियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि भाई तुम जो प्रोडक्शन कर रहे हो, और एक हमारी बेंगलोर का क्लाइंट है, वो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स 200 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है और उनकी पेटेंट्स भी है और उनका 10 CR का टर्नओवर है। तो अब हमारा रोल हम क्या देख रहे हैं कि गिफ्ट सिटी में वो हमने एक EIF क्रिएट करने का प्लान किया है। वो EIF रूट थ्रू हम उनको फाइनेंस करेंगे और एक स्केल बेस्ड प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज इंडिया में क्रिएट करेंगे। अब वो क्रिएट होने के बाद अब इतना काम हम CA के रोल के हिसाब से सोच सकते हैं कि हमने EIF क्रिएट किया, EIF का क्वार्टरली ऑडिट करेंगे, अकाउंट बनाएंगे और इसकी फी देंगे। अब हम वैल्यू एडिशन सर्विस क्या ऑफर किया इन लोगों का, तो हमने वो ऑफर किया कि अगर आप हमें ये में 5% शेयर अलॉट करते हैं तो हम आपके बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे आप ले जा सकते हो, उसका मार्केटिंग, उसका कोलैबोरेशन फॉरेन में, ये सब काम भी हम लोग कर देंगे। तो ये जो वैल्यू एडेड सर्विस हमने जो ऑफर की, उससे वो इन्वेस्टर्स है वो भी एग्री हुए और जो बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी एग्री हुए और हमें 5% शेयर देने को तैयार हो गए। तो दिस इज आवर वैल्यू एडिशन अपॉर्चुनिटीज। तो हम चाहते क्या है कि CA के साथ इन्वेस्टर्स भी कनेक्टेड होते हैं वर्ल्ड वाइड और बिजनेसेस भी कनेक्टेड होते हैं। अब गिफ्ट सिटी काम क्या करती है? गिफ्ट सिटी काम करती है जिसको पैसा इन्वेस्ट करना है उसको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिसको बिजनेस के लिए पैसे चाहिए उनको भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप गिफ्ट सिटी में बैठे तभी गिफ्ट सिटी से कनेक्टेड हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके किसी क्लाइंट को $5 मिलियन या उससे ज्यादा फंड चाहिए और उसके पास अपनी प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस मॉड्यूल है तो आप गिफ्ट सिटी का अप्रोच कर सकते हैं और गिफ्ट सिटी से आप डेट फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस, स्टार्टअप फाइनेंस, एंजल फाइनेंस कुछ भी पा सकते हैं, क्योंकि जितने भी FME रजिस्टर्ड है वो ये सब सोर्स ऑफ फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास 500 करोड़ का कोई अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें FME को रियलाइज होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट पॉसिबल है, तो FME करेगी क्या? अपना एक EIF क्रिएट करने का प्लान करेगी। वो प्लान करने से पहले अपने इन्वेस्टर नेटवर्क को अप्रोच करेगी कि भाई ये बिजनेस है और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स की कंफर्मेशन लेंगे FME। अब मान लीजिए हमने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमारे पास 1200 इन्वेस्टर्स है, तो हमने सबका अप्रोच किया, उसमें से हमने मान लीजिए 400 इन्वेस्टर्स एग्री किया कि हाँ हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो वो 400 इन्वेस्टर का हम सॉफ्ट अप्रूवल लेंगे, एक EIF क्रिएट करेंगे, वो रजिस्टर्ड करवाएंगे, आपके बिजनेस से भी MOU करेंगे और उसके बाद EIF में पैसा हम लाएंगे। वो पैसा हम डॉलर टर्म में ही इंडिया में फाइनेंस कर सकते हैं। ये कंडीशन में डिस्कस करना आपसे भूल गया था। गिफ्ट सिटी में कोई भी EIF बनेगा वो नॉन इंडियन करेंसी में बनेगा। वो इंडिया में किसी को भी इन्वेस्ट करेगा तो वो नॉन इंडियन करेंसी में ही देगा, वो फिर बाय वे ऑफ डेट देना हो या बाय वे ऑफ इक्विटी देना हो। और वहां से जो रिटर्न भी गिफ्ट सिटी में पैसा आएगा वो भी हमें नॉन इंडियन करेंसी में ही लेना है। यानी गिफ्ट सिटी में कुछ भी काम होगा, अगर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहा हूं तो वो नॉन इंडियन करेंसी से ही होगा, वो और नॉन इंडियन करेंसी में ही हमें पैसा लेना है और पैसा डिप्लॉय करना है कोई भी बिजनेस इसमें। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल ये समझता हूँ, ऑलवेज गिफ्ट सिटी अथॉरिटी से भी मैं यही बात करता हूँ कि अगर आपको कोई हाई नेटवर्क या अल्ट्रा हाई नेटवर्क इन्वेस्टर्स लाना है तो वो CA कम्युनिटी के पास होते हैं। अगर आपको कुछ अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है तो वो भी CA कम्युनिटी के पास होती है। तो हम CA लोगों का काम यह है कि बिजनेस इसको, इन्वेस्टर्स को जो भी डिमांड सप्लाई है उसको हम गिफ्ट सिटी थ्रू फुलफिल करेंगे और गिफ्ट सिटी थ्रू फुलफिल करेंगे तो उनको टैक्स एग्जम्पशन और टैक्स हेवन के लिए फिर दुबई, सिंगापुर या फिर कोई अलग अलग पार्ट जो टैक्स हेवन वर्ल्ड के, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। और ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के जो दुबई से काम करना चाहते थे या सिंगापुर से चाहते थे, उन सबको हम ऑलरेडी गिफ्ट सिटी में ट्रांसफर करवा सके। एट प्रेजेंट हमारा एक क्लाइंट है जो UK का म्यूचुअल फंड वहां चला रहा है, तो उसको भी हमने एनकरेज किया और एग्री किया कि आप गिफ्ट सिटी में अपने आप को रजिस्टर्ड करिए। क्योंकि गिफ्ट सिटी में फायदा क्या होता है, अगर हमारी 100 लोगों की टीम मैं गिफ्ट सिटी से रन कर रहा हूँ
सेम टीम अगर मैं सिंगापुर या दुबई से करता तो मेरी कॉस्ट 10-20 टाइम ज्यादा होती। अगर वो इंडिया में 10 टाइम कम है, मुझे लो कॉस्ट से बहुत ही स्मार्ट पर्सन और स्टाफ मिल जाता है, टीम मिल जाती है, तो मैं कम कॉस्ट से अगर अपने इंटरनेशनल क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो वहां भी मुझे वो बेनिफिट मिल सकता है, और क्लाइंट को भी मैं कम कॉस्ट से ऑफर कर सकता हूँ कंपेयर टू दुबई और सिंगापुर। तो यही गिफ्ट सिटी का बेसिक पर्पस है। तो आप गिफ्ट सिटी में हमारे तरीके से आके भी अपना काम कर सकते हैं। अगर आप गिफ्ट सिटी से दूर रह के गिफ्ट सिटी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप एज अ ऑडिटिंग फर्म तो हम अपना आउटसोर्स कर ही सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो शिप लीजिंग, प्लेन लीजिंग का ऑडिट है वो गिफ्ट सिटी में ही करवाए। हम गिफ्ट सिटी के बाहर भी वो काम आउटसोर्स कर सकते हैं। लेकिन आपके जो क्लाइंट इंडिया में सिचुएटेड है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो बिजनेस के लिए पैसा चाहते हैं, आप उसके लिए भी गिफ्ट सिटी में बैठी हुई जो एंटिटीज है, फंड मैनेजर्स, आप उनका अप्रोच कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। फ्यूचर वेबिनार पॉसिबल होगा तो हम उसमें स्पेसिफिक एरिया ऊपर डिस्कस कर पाएंगे। इस बार का बेसिक पर्पस यही था कि आप गिफ्ट सिटी के जो मेजर एडवांटेजेस है वो जान सके, और एज अ सीए प्रोफेशनल आप कैसे कनेक्ट हो सके, वही हमारा बेसिक पर्पस है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इतनी सर्विसेज गिफ्ट सिटी थ्रू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट के जो गिफ्ट सिटी थ्रू एक्टिविटीज करते हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। लीगल सर्विसेज, आप एफएमई रजिस्टर्ड करवाना, एआईएफ रजिस्टर्ड करवाना। अब एआईएफ रजिस्ट्रेशन का मतलब यही हुआ कि वो कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, नथिंग एल्स। आपको उसका भी आर्टिकल बनाना है, उसका भी प्रोस्पेक्टस बनाना है, उसका भी मेमोरेंडम बनाना है, जो लीगल सर्विसेज है। कॉम्प्लायंस सर्विसेज, आपको क्वार्टरली ऑडिट करवाना है, एनुअल रिटर्न्स फाइल करना है, जो रिलेवेंट अथॉरिटीज है, वो सर्विस भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अब ये सर्विस को भी फिनटेक सर्विस में मान लिया गया है गिफ्ट सिटी में। यानी अगर आपने कोई इंटरनेशनल क्लाइंट का अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग का काम गिफ्ट सिटी थ्रू किया तो भी आप सेज में ही आते हैं, और सेज में आने के बाद कुछ कंडीशंस फुलफिल करने के बाद आप आउट ऑफ 15 ईयर 10 ईयर का हॉलीडे टैक्स एग्जम्पशन पा सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि आपको इंटरनेशनल क्लाइंट का काम करना है। अब इंडियन क्लाइंट का काम करके टैक्स एग्जम्पशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ये वर्ड मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। टैक्स सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, सर्टिफिकेशन का काम हो गया, और जो भी एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हम इंडियन क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं, वो सेम सर्विस हम गिफ्ट सिटी थ्रू इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं। और इंटरनेशनल क्लाइंट से हमें जो इनकम होगी वो एग्जम्प्टेड है, और उस पर हमें इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं पे करना है, हमें डायरेक्ट टैक्स भी नहीं पे करना है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जो मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया कि हम ईआरपी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी कंपनी ईआरपी में भी इन्वॉल्व है, SAP, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स या कुछ भी इंटरनेशनल क्लाइंट को डिप्लॉय करवाना है तो वो भी हम करवा सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। हम उनको ग्लोबल मार्केटिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे हमने 6 कंट्रीज में हमारा प्रेजेंस क्रिएट किया है, तो 6 कंट्रीज में अगर हमने हमारी ब्रांचेस ओपन की है तो हम इंडियन क्लाइंट्स को ऑफर कर सकते हैं कि भाई हम आपको कैसे ग्लोबल कर सकते हैं। आपको ग्लोबल कोलैबोरेशन यूएसए से करने हो, यूरोप से करने हो, गल्फ कंट्रीज से करने हो तो कैसे हो सर्विस हम हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं गिफ्ट सिटी थ्रू, कि उसको हम कह सकते हैं तुम अपना कॉस्ट सेंटर यहाँ क्रिएट करो, और वो कॉस्ट सेंटर हम इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को 25 लोगों की टीम के साथ अपने इंटरनेशनल क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करनी है, और वो मान लो यूएसए गिफ्ट सिटी में अपनी ऑफिस बनाएगा और फिनटेक सर्विसेज या गिफ्ट सिटी से प्रोवाइड करेगा, तो उसको लो कॉस्ट प्रीमाइसेस मिल जाएंगे, लो कॉस्ट टीम मिल जाएगी, लो कॉस्ट एक्सपर्टाइज मिल जाएगी, तो 1/3 कॉस्ट से वो अपने इंटरनेशनल क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये टाइप की सर्विसेज भी हम गिफ्ट सिटी थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, फिनटेक सर्विसेज में आप अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और बुक कीपिंग को भी IFSC एक्ट में इन्वॉल्व कर लिया गया है। तो अब आप ये सर्विसेज अगर इंटरनेशनली प्रोवाइड करना चाहते हैं तो भी आप गिफ्ट सिटी आ सकते हैं, या फिर आप गिफ्ट सिटी में जो एग्जिस्ट करते हैं उनके थ्रू इंटरनेशनल क्लाइंट को पिच करके फिर आप इंडिया से भी आउटसोर्सिंग काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपका यूएसए में कोई क्लाइंट है,
आप उसको अप्रोच करिए, जो गिफ्ट सिटी में एंटिटीज है हमारी जैसी या कोई भी और, उनसे मिलकर आप कंबाइनली अप्रोच कर सकते हैं। वहां काम गिफ्ट सिटी में है, लेकिन हम गिफ्ट सिटी में से काम लिया तो ऐसा जरूरी नहीं है वो काम हमें गिफ्ट सिटी में ही करना है, हम वो काम इंडिया में आउटसोर्स कर सकते हैं। तो हमने अगर कोई इंटरनेशनल क्लाइंट का काम लिया और आपके थ्रू आउटसोर्स करके जो गिफ्ट सिटी के बाहर बैठा है उनसे काम करवाया, तो हमें आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना है, वो एग्जम्प्टेड है। तो इस तरीके से भी आप गिफ्ट सिटी में आके ही गिफ्ट सिटी में जो काम हो रहा है वो कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप गिफ्ट सिटी में जो एंसिलरी ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे भी कोलैबोरेशन करके काम कर सकते हैं, और खुद आके करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। लेकिन गिफ्ट सिटी में सेज में अगर आपने ऑफिस क्रिएट की तो वो ऑफिस से आप डोमेस्टिक क्लाइंट को सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, एट द सेम टाइम आप इंडियन करेंसी में बिलिंग रेज नहीं कर सकते। तो आपकी एक ब्रांच ही, इंटरनेशनल ब्रांच ही गिफ्ट सिटी में हो सकती है, वहां से आप कंबाइंड एक्टिविटीज नहीं कर सकेंगे जो इंटरनेशनल क्लाइंट को भी प्रोवाइड करे और डोमेस्टिक को। तो हर गिफ्ट सिटी में बैठा हुआ चार्टर्ड बैठी हुई ये फर्म जो होती है उसकी दो ऑफिस होती है, एक गिफ्ट सिटी में फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट एंड IFSC क्लाइंट, और दूसरी ब्रांच डोमेस्टिक ब्रांच होती है। तो ये चीज समझ लेनी खूब जरूरी है कि आप अगर दो ब्रांच कर सकते हो तभी गिफ्ट सिटी, वरना आप ऐसा नहीं क्रिएट कर सकेंगे कि गिफ्ट सिटी में आके आप आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस भी वहां से संभालिए और गिफ्ट इंटरनेशनल क्लाइंट का भी संभालिए, ये पॉसिबल नहीं है, ये एक लिमिटेशन भी है। ट्रस्टीशिप सर्विसेज, क्योंकि फैमिली फाउंडेशन बनेगा, ट्रस्ट बनेंगे गिफ्ट सिटी में, अगर वहां ट्रस्ट बनते हैं, फैमिली फाउंडेशन बनते हैं, तो एज पर लीगल कॉम्प्लायंसेस उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ट्रस्टीज अपॉइंट करने पड़ते। तो ये सर्विस भी आप अगर सीए फर्म के तरीके से यहाँ रजिस्टर्ड है तो ये सर्विस भी IFSC यूनिट्स को आप ऑफर कर सकते हैं। और एनी अदर सर्विसेज जो फ्यूचर में IFSC अलाउ करेगी वो सब सर्विसेज एज अ सीए एंसिलरी यूनिट आप गिफ्ट सिटी में एस्टेब्लिश होके आप प्रोवाइड कर पाएंगे। तो गिफ्ट सिटी में अगर किसी सीए फर्म ने या सीए ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया तो दो टाइप के क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, एक जो इंडिया के बाहर बैठा हुआ क्लाइंट है और दूसरा जो IFSC का मेंबर है। जो IFSC यूनिट्स है उनको भी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, सिर्फ आप सेल्स के बाहर के क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और गिफ्ट सिटी ये तो सिर्फ एग्जांपल है, मोर देन 100 बिग ऑर्गेनाइजेशंस गिफ्ट सिटी में आ चुके हैं, लेकिन ये बड़े बड़े जायंट नेम है। गूगल, आप ऑलरेडी अभी USA के जो विजिट अपने प्राइम मिनिस्टर की थी उसी वक्त डिक्लेयर हुआ था, IBM है, SBI है, JP मॉर्गन है, सिंगापुर एक्सचेंज ने भी अपनी एक्टिविटीज यहाँ स्टार्ट कर दी, NSE, BSE। अब जो फाइनेंशियल बड़ा नाम दुनिया का लोग है वो 80% चांस है कि गिफ्ट सिटी में आ चुके हैं या आने वाले होंगे, क्योंकि अब गिफ्ट सिटी को कोई भी इग्नोर कर सके ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर ज्यादा कोई इंक्वायरीज हो तो आप CA श्वेतांक पंड्या से कांटेक्ट कर सकते। मैं जानता नहीं हूँ मैं अपना कांटेक्ट नंबर यहाँ दे पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर हो तो आप कांटेक्ट टीम मेंबर जो इंस्टीट्यूट के उनसे कांटेक्ट करिए, या अलाउ करते हैं तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। आप गिफ्ट सिटी के बारे में हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम होप करते हैं कि फ्यूचर में भी अगर गिफ्ट सिटी के बारे में स्पेसिफिक ये EIF कैसे क्रिएट होता है। हाँ, एक और मैं अनाउंसमेंट यहाँ कर सकता हूँ, CA इंस्टीट्यूट अहमदाबाद ब्रांच प्लान कर रही है 7 और 8 अक्टूबर को 2 दिन का इवेंट अहमदाबाद ब्रांच होस्ट करने वाली है गिफ्ट सिटी में ही। और ये जो 2 दिन का इवेंट होने वाला है उसमें हमने ये कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया है कि गिफ्ट सिटी की जितनी अथॉरिटीज है, जितनी भी, वो हर अथॉरिटी अपना से लेकर 1 घंटे का प्रोग्राम वहां रखेगी और आपके साथ हर अथॉरिटी डिस्कस करेगी कि आप कैसे उनसे जुड़ सकते हैं और कैसे आप बिजनेस कर पाएंगे। तो ये एक प्लान वर्कआउट हो रहा है 7 और 8 अक्टूबर को गिफ्ट सिटी में ही, 1 नाइट 2 डेज का इवेंट रहेगा। और गिफ्ट सिटी की ऑलमोस्ट हम ऑलरेडी गिफ्ट सिटी अथॉरिटी से मिलना स्टार्ट भी कर दिया है, और लास्ट ईयर भी 13 जनवरी को ये सेम इवेंट 1 दिन का हो चुका था, लेकिन उस वक्त इंट्रोडक्टरी डिस्कशंस हुए थे। इस बार प्लान ये है कि आप हर अथॉरिटी को मिल के आप ये जानना चाहेंगे कि भाई FME कैसे रजिस्टर्ड होता है,
ऑथोराइज्ड कैसे होता है, नॉन रिटेल कैसे होगा, रिटेल कैसे होगा, उसमें एआईएफ कैसे क्रिएट होगा, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका कैसा डॉक्यूमेंट होगा, हर चीज का जो प्रोसेस है उसके बारे में ये 2 दिन का प्रोग्राम वर्कआउट करने का प्लान किया हुआ है। तो बस इतना ही मेरी ओर से, और कोई क्वेरीज हो तो आप रेज कर सकते। बोला मैं सुबह। We have questions. Am I audible? Yes, yes, please. So, is there any cap limit for amount of fund invested through GIFT City? No, lower limit is there, upper limit is not there. Okay. Second question is, if salary to seafarers working outside India for Indian shipping companies remitted through GIFT City branch will be treated as foreign remittance for taxation benefit? Sorry, please repeat. करेंगे आप? Salary to seafarers Okay. working outside India for Indian shipping companies Okay. remitted through GIFT City branch will be treated as a foreign remittance for taxation benefit. अगर आपने गिफ्ट सिटी से शिप रजिस्टर्ड की है इंडिया में, यही है ना क्वेश्चन, और उसके जो क्रू मेंबर्स है वो आउटसाइड इंडिया से, तो इनको इंडिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि गिफ्ट सिटी से जो कुछ भी होता है वो पार्ट ऑफ इंडिया नहीं। तो जैसे मैंने दुबई से इंटरनेशनल स्टाफ को अपॉइंट किया और दुबई में ही पैसा पे कर दिया, तो उससे और इंडियन गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। So whether it is necessary to have branch in GIFT City for taxation benefits? Yes, without opening branch in GIFT City, you are not getting any taxation benefit. But mind well, you are eligible to provide service only 2 type of clients. One client, international client out of India, and second, situated in IFSC, not in domestic part of GIFT City. So you can provide only to IFSC unit service and international clients. You are not allowed to provide service domestic client in India. Okay. So whether what are the processes and advantages of shares and derivative trading in Indian and global stock exchange through GIFT City? Yes, it is a very important question I am going to tell about in 2 minutes, but it requires 1 hour. अगर उसको पूरे तरीके से समझना तो 1 घंटा चाहिए, मैं शॉर्ट में समझा। अगर आपको इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में काम करना है तो इंडिया में अलाउड ही नहीं, वो आप गिफ्ट सिटी थ्रू ही कर पाए। अगर गिफ्ट सिटी थ्रू हम वी नीड टू क्रिएट एआईएफ, हमें एक एआईएफ बनाना पड़ता है। वो एआईएफ के प्रोस्पेक्टस में लिखा जाएगा जो पैसा आएगा वो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में डिप्लॉय होगा। अब अगर हमने इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में डिप्लॉय किया तो एडवांटेज है कि इंडिया में 190 कंपनीज टू ट्रेड है इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ 3 मार्केट कवर किए, जापान, यूरोप और यूएसए, तो 1500 प्लस सिक्योरिटीज है। इंडिया का मार्केट 6.25 घंटा चलता है, वहां का मार्केट कंटिन्यूअस 21.5 घंटा चलता है, तो ओवरनाइट रिस्क नहीं बचता। अगर हमने कोई चीज जापान में एंट्री ली तो कुछ चीजों का एग्जिट मुझे यूरोप में भी मिलेगा, अमेरिका में भी मिलेगा, तो ओवरनाइट रिस्क नहीं बचता। तो इंडिया में अगर 100 रुपए का नुकसान होता है डोमेस्टिक मार्केट में, तो उसका रीजन एक ही होता है 70 रुपीज का, कि ओवरनाइट रिस्क होता है। 3:30 बजे सब सही था, सुबह 9:15 बजे दुनिया बदल गई। तो ये प्रॉब्लम गिफ्ट सिटी थ्रू अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं तो हमें नहीं रहता। तो आप सिंपल ऐसा समझिए कि इंडियन डोमेस्टिक मार्केट ऐसी ट्रेन है जिसमें 190 सीट्स है और वो ट्रेन 6.25 घंटे ही चल सकती है, और गिफ्ट सिटी थ्रू हम इंटरनेशनल ट्रेन जो चलाते हैं वो 1500 सीट की है और उसको हम 21.5 घंटा चला सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है इसमें लिक्विडिटी इश्यू होता है। अगर आपको 20 कंपनी छोड़ के 21वीं कंपनी में 100 लॉट्स अगर लेने हो तो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट ही 1.25% हो जाती, एंट्री कॉस्ट भी हो जाएगी, एग्जिट कॉस्ट भी हो जाएगी, क्योंकि आप ही 100 लॉट में 1% प्राइस बढ़ा देंगे एंट्री के वक्त और एग्जिट के वक्त कम कर देंगे। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में कुछ काम करते हैं तो वहां उतना ह्यूज वॉल्यूम होता है कि आपकी एंट्री एग्जिट कॉस्ट कोई बनती नहीं है। तो ये जो बेनिफिट है वो
इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट इन गिफ्ट सिटी, ये उसके लिए पूरा 1 घंटा चाहिए कि, और वो मोनोपोली सिर्फ गिफ्ट सिटी की, वो इंडिया में एट प्रेजेंट कोई और अथॉरिटी को अलाउड नहीं किया गया है, और वो भी हम इंडिविजुअल क्लाइंट थ्रू अभी नहीं कर सकते, हम AIF रूट थ्रू ही कर सकते हैं। नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है $1.5 लाख की कंडीशन के साथ हम PMS सर्विस फॉर इंटरनेशनल मार्केट इंडियन क्लाइंट को भी प्रोवाइड कर पाएंगे। Thank you so much, sir. From stage to areas of working in Gift City, from chartered accountants, how they can play a role in Gift City on behalf of ICAI, CPE Committee. I thank you so much, sir, for giving us valuable. Thank you so much. Most welcome.